Good morning, everyone. We welcome you all in the Emerging Stars Champions Trophy, and we are ready for the toss. And Bhavik from Northern Knights, Hitarth from Northern Knights, and Bhavik from Rising Titans are here, and umpire is here. Umpires, time for the toss. Heads is a call from Rising Titans, and it is heads. Bhavik, you have won the toss. What you have decided? Please tell me. We'll bowl first. And why you bowl first? The wicket is a little wet, and Yeah, tell me. there is some moisture on the wicket, so it will be difficult for batting. And we will try to restrict them for 150 runs. Good choice from the young captain from Rising Titans, and Hitad is on the second side. Hitad, you are on the second side, but you will choose if you will win the toss. We would have also chosen to bowl first because the wicket is a little soft, and by the time the first innings will be done, it will be good to bat. But again, we got two bats, so we'll do our best, try to score some runs, stay on the wicket as much as we can. All the best to both the captains. Thank you. This is from the toss side. Thank you.
Bowler name. Bowler name. I request. Please tell me the bowler name. क्या बता दिया? क्या नाम है? दूसरा ओवर है, पहला ओवर है? बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पर कबीर द्वारा। ना ना अभी ले रहा हूँ, अभी ले लूंगा, कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं। अच्छा ऐसा लग रहा हो ना सर पे खड़ा हूँ मैं। नहीं नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बैठ बैठ बैठ। इसका सात्विक का दूसरा ओवर है, पहला? सात्विक द्वारा एक और अच्छी बॉल, बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पर, बॉल हाथों में जाती हुई। और कबीर बहुत ही अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं, बहुत ही शानदार प्लेयर हैं, कॉन्फिडेंट प्लेयर हैं अपनी टीम के। हितार्थ नॉर्दर्न नाइट्स के कैप्टन हैं, भाविक अरोड़ा राइजिंग टाइटंस के कैप्टन हैं। आज ऑडियंस को बहुत ही शानदार मैच देखने के लिए मिलेगा। एक और अच्छी बॉल और भाविक के हाथों में बॉल। दोनों टीम्स बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आज उतरी हैं ग्राउंड पे। दोनों के माइंडसेट बहुत ही क्लियर हैं। एक और अच्छी बॉल, अच्छा शॉट, वहां पर सिंगल मिलेगा। हमारे अंपायर दोनों ही बहुत ही शानदार अंपायर्स बुला रखे हैं और थैंक यू टू बोथ द अंपायर्स। बहुत ही शानदार बॉलिंग करते हुए यहाँ पे सात्विक। जैसे जैसे ये मैच धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, वाइट, इस ओवर की ये पहली वाइट होती हुई सात्विक की। अच्छे रिदम से बॉल डाल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंट है और काफी मजा आ रहा है उनको देख के। यहाँ से बहुत कॉन्फिडेंस है, अपनी बॉलिंग पे भरोसा है और टीम उनको पूरी बैक करती हुई यहाँ पर। हितार स्ट्राइक पर, एक और अच्छी बॉल और यहाँ पर सिंगल मिलता हुआ। अच्छी बॉल, यहाँ पर कोई रन नहीं मिलेगा और यहाँ पे ओवर की समाप्ति होते हुए आराम। चेयर 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 अभी यहाँ पे कोई है नहीं, अभी जैसे कोई आता है मैं भिजवाता हूँ। कोई सा भी उठा ले, कोई सा भी उठा ले जो तेरा मन करे, कोई सा भी उठा ले जो तेरा मन करे। अरे सब उठा ले, तेरी है भाई, सब तेरी है। कौन है? गणेश। एक और अच्छी बॉल और बहुत ही शानदार 4 रन मिलते हुए यहाँ पर हितार्थ बहुत ही अच्छे फॉर्म में। गणेश की पहली बॉल पर 4 रन मिलते हुए। अक्षय, हेलो।
अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, सॉरी सॉरी। और है, पहुंच रहा है। एक और अच्छी बॉल, गणेश बहुत ही अच्छे रिदम में यहाँ पर बॉल करते हुए पिछले ओवर में 2-3 वाइड डाली थी, बट अब दूसरे ओवर में अपने बहुत ही अच्छा कमबैक करते हुए टीम उनको पूरी बकअप करते हुए 34 नंबर की जर्सी पहनी हुई है। और एक अच्छी बॉल, और ये पहला छक्का। म्यूजिक तेज कर दे शिवम, म्यूजिक तेज कर दे, म्यूजिक, शिवम म्यूजिक तेज कर दे, फुल फुल, थैंक यू। एक और अच्छी बॉल, और यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन, और बट एक रन चुराते हुए, और यहां पर विकेट गिरती हुई कबीर खान की। दोनों ही बैट्समैन में थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन, और यहां पर विकेट गवाते हुए कबीर खान। और बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहां पर राइजिंग टाइटंस द्वारा, कीपिंग बहुत ही शानदार होती है, और पहली विकेट गिरती हुई यहां पर कबीर खान की नॉर्दर्न नाइट्स के लिए। कबीर खान है, कबीर खान आउट हुआ है। अच्छा, भाई का फोन है। हाँ हाँ, अक्षय का फोन आ गया। हाँ यार, थोड़ी गलती हो गई। हाँ, वो थोड़ा सा ये साला फोन ना बाद साइड में रखना पड़ेगा। हेलो, 1 2 3 चेक। कोई नहीं, ठीक है, डन। हाँ, स्टार्ट। हाँ, भाई लाइव जा रही है यार, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा सुन, एक मिनट क्लियर कर दे। यहाँ पर आकर अगर मैं बोलूँगा तो भी। हाँ भाई ये वायरलेस इशू है क्या? सॉरी, कुछ भी बात करो सब जाएगी। अच्छा अच्छा, सब मेरे बोल रहा है। अभी ऑन मत कर, पहले समझना दो किसका क्या क्या है। ठीक है। कौन कौन है ये?
बताता हूँ। Like, So, hi everyone, this is MC Agranshu, and we are back with the very first season for Emerging Star Champions Trophy. And this is day two, and day two का आज हो रहा है पहला match. This is the early morning match happening between Northern Knights and none other than Rising Titans. So let's see how the match goes today. So far, we have 3 ओवर हो चुके हैं जिसमें the team has already scored like 28 run with 1 wicket. And the bowler we have over here is Satvik Tiwari. So far इस ओवर की अगर बात की जाए तो we have got approx 3 runs coming. That was काफ़ी great shot and उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग भी की गई टीम द्वारा. And now talking about our batsman, we have Arnav and again definitely the captain playing on the other side, Hitarth. So far, Hitarth has made 21 runs out of 15 balls, and then we have Arnav, जिसने अभी तक 5 balls खेली हैं and have scored 1 run so far. So आज का देखने पड़ेगा how's the competition gonna go. क्या Northern Knights today also they will be able to capture it, win it. लाइट मार। So that's all right now. थोड़ी सी लाइन से ज़्यादा बाहर थी. So definitely अंपायर ने सही डिसीजन लिया, giving it a wide. And Satvik definitely अभी तक this is his second spell, second over. अभी तक 6 रन दे चुके हैं overall. थोड़ी सी लाइन एंड लेंथ डेफिनेटली टीम अभी चाहेगी कि वो लोग इनकी परफॉर्मेंस देख चुके हैं. राइजिंग टाइटंस हैव ऑलरेडी सीन कैसा गेम प्ले रहा था फर्स्ट मैच में, तो डेफिनेटली दे वांट टू मेक श्योर कि सेकंड मैच में दे आर डूइंग मच बेटर. थोड़ा समय से यहाँ पे दूसरे फील्डर मौजूद, रन लेने की सोची बट कैंसिल किया. एंड दैट वाज अ गुड डिसीजन बिकॉज दैट वाज अ डायरेक्ट हिट. काफ़ी अच्छा डायरेक्ट हिट था. ऐसे टाइम अगर दोनों ने रन लेने की कोशिश की होती तो डेफिनेटली ये विकेट जाना था यहाँ पे. तो टीम को डेफिनेटली नॉर्थन नाइट्स को ये मेक श्योर करना है कि दिस टाइम दे मेकिंग श्योर कि कोई गलती नहीं हो रही है. फर्स्ट गेम में जो उन्होंने अचीव किया था वो दे आर एबल टू अचीव अगेन. सो लेट्स सी हाउ इट गोस. सोचा वो कर दिया क्या? 1 एंड है देखना।
So we are back now, and now we are getting started with fifth over. Divyansh is the bowler this time. First ball, not ball. Team motivation is definitely full power. Rising Titans को आज देखना पड़ेगा how much they are able to rise up Northern Knights. स्वीप करने की कोशिश एंड डेफिनेटली ये होगा एक चार बेहतरीन और ये 4 रन आते हुए हितात के बल्ले से. So इसी के साथ with 17 balls he has reached to 25 runs. एंड काफी अच्छी सोच थी वहां पे. एक सिर्फ एक टुक लेके डायरेक्शन दिखाई है बॉल को एंड दैट वाज अ वेरी कैलकुलेटिव मूव बाय हितात. वी हैव ऑलरेडी सीन हिम प्लेइंग लास्ट मैच जो फर्स्ट ओपनिंग डे पे मैच हुआ था. इट वाज काफी काफी इंटरेस्टिंग मैच रहा था. अनदर बॉल, डॉट बॉल. काफी अच्छी बॉलिंग, काफी अच्छी लाइन एंड लेंथ बाय लव्यांश. 3 बॉल अभी तक हो चुके हैं इस ओवर की. वी हैव स्कोर्स अराउंड 35 रन्स, 1 विकेट के नुकसान पे. नेक्स्ट बॉल एंड उठा के मारा है, देखना पड़ेगा. एंड दैट्स अ 4 अगेन. दैट्स अ 4. काफी बढ़िया है. एंड अगेन इट्स कमिंग फ्रॉम नन अदर देन स्टार्ट के बल्ले से. कोई कम गलती नहीं इस बार भी. पूरा कैलकुलेट किया, काफी अच्छे से प्लान करके उन्होंने टाइम लिया एंड देन ही जस्ट टुक इट. एंड फील्डर के ऊपर से भी थी बॉल, तो काफी अच्छा शॉट डेफिनेटली. लास्ट द बॉल इज ओवर की. एक और डॉट बॉल. काफी अच्छी सोच यहाँ पे कि हर एक बॉल पे शॉट नहीं लेना है, वो रिस्क नहीं लेना है. अभी स्टार्ट ही हुआ है, इसको एक काफी स्लो एंड स्टेडी वे में लेके जाना है. एंड इसके साथ लास्ट बॉल ओवर की. काफी अच्छा हिट किया है. ओहो, एक और मिस फील्ड का यहाँ पे भुगतान देना पड़ेगा राइजिंग टाइटंस को. एक और चौका और इसी के साथ इस ओवर में आ चुके हैं 3 चौके अभी तक एंड तीनों गए हैं हितात के बल्ले से. सो हितात है अब 33 रन्स पे आफ्टर 21 बॉल्स एंड अर्नव इज एट 1 रन विद 7 बॉल्स. 5 ओवर हो चुके हैं इस गेम के अभी तक एंड स्कोर इज 39 रन्स, 1 विकेट के नुकसान पे. अब देखना पड़ेगा राइजिंग टाइटंस को विच बॉलर दे गोना ब्रिंग. क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या प्लानिंग रहेगी. थोड़ी सी मिस फील्डिंग हमें दिखते हुए यहाँ पे. दैट डेफिनेटली टीम नीड टू मेक श्योर कि वो कवर अप कर रहे हैं. सात्विक वापस आते हुए एंड फर्स्ट बॉल विल बी प्लेड बाय अर्नव. काफ़ी अच्छा स्वीप, काफ़ी प्लान वे में किया एंड इट वाज ग्रेट. एंड होल्ड करते हुए बॉल को काफ़ी अच्छे रन. सो वी आर बैक अगेन एंड नॉट द नाइट्स पहुंच चुके हैं 43 रन्स पे, 1 विकेट के नुकसान के साथ. अभी तक ओवर के हो चुके हैं 4 बॉलें.
एंड अभी तक काफी अच्छा ओवर रहा है ये, काफी प्लान वे में 4 डॉट बॉल्स निकाली हैं। अर्नव को थोड़ा सा प्लान चेंज करना पड़ेगा, 11 बॉल हो चुकी हैं, सिर्फ 1 रन आया अभी तक, और इसके साथ 5वीं बॉल ओवर की एक और बार स्वीप करना चाह रहा है, बट अगेन फील्डर के हाथ में। काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे, डेफिनेटली जो अभी तक 1-2 मिस फील्डिंग हुई थी उससे काफी बेटर किया है अब टीम ने, काफी स्ट्रांग गेम प्ले होता हुआ यहाँ पे टीम का। वहीं पे अर्नव 12 बॉल हो चुकी हैं, 1 रन अभी तक आए हैं सिर्फ बल्ले से, सो डेफिनेटली कुछ चल रहा होगा माइंड में कि हाउ कैसे और बेटर कर सकते हैं, कितना और बेटर रन्स और कहाँ बेटर शॉट्स खेल सकते हैं। एक और बार खेलना चाहे, बट अगेन फील्डर के हाथ में। काफी अच्छा ओवर रहा ये राइजिंग टाइटंस के लिए। 6 ओवर हो चुके हैं, लास्ट ओवर में 1 रन भी नहीं आया है, एंड आफ्टर 6 ओवर 43 रन, 1 विकेट के नुकसान के साथ हैं नॉर्थर्न नाइट्स। मे बी यहाँ पे हितार्थ एंड अर्नव माइट बी डिस्कसिंग कि कैसे कर सकते हैं, कहाँ पे शॉट्स निकाल सकते हैं, कहाँ से रन्स निकाल सकते हैं, कौन से वो गैप्स हैं जहाँ पे वो शॉट्स आएंगे, जहाँ से वो रन्स आएंगे। एंड विद दिस द नेक्स्ट बॉलर वी हैव इज लव्यांश अगेन। लव्यांश का लास्ट ओवर था, थोड़ा सा महंगा पड़ा था, 3 चौके आए थे उस ओवर से, सो अब देखते हैं इस ओवर में कैसा रहता है। फर्स्ट बॉल प्लेड बाय हितार्थ, अगेन काफी बढ़िया स्वीप, एक और मिस फील्ड यहां पे, पर पीछे फील्डर मौजूद, सिर्फ 1 रन मिलेगा। तो टीम इज, लास्ट वीक हमने नॉर्थर्न नाइट्स की परफॉर्मेंस देखी थी इन द फर्स्ट मैच, हितार्थ की परफॉर्मेंस थी, तो डेफिनेटली वी वांट टू सी कैसा आता है इस बार। एक और बार स्वीप किया है आराम से, फील्डर मौजूद, कोई गलती नहीं इस बार, 1 रन आते हुए एक और बार। तो अभी तक इस ओवर में हो चुके हैं 2 गेंदे, 2 रन आ चुके हैं अभी तक। तीसरी बॉल इस गेम की, अपील की गई एम्पायर को, बट डेफिनेटली काफी डिस्टेंस था। Hitat is still ready, planning and trying to find the best way. आज में भी वो सेंचुरी के प्लान में होंगे। ओ ये मिस था, ये मिस था, ये मिस नहीं होना चाहिए था। दैट वाज अ वेरी क्लोज मिस। टीम को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसी गलती नहीं कर सकते हैं। जितनी जल्दी से वो लोग ट्राई करना चाहेंगे, डेफिनेटली राइजिंग टाइटंस जितनी ज़्यादा विकेटें वो निकाल पाए वो निकालें, क्योंकि लास्ट मैच में हम देख चुके हैं कि नॉर्थर्न नाइट्स ने मौका कोई नहीं गवाया था। एक और स्वीप किया है, पीछे फील्डर मौजूद, 1 रन ही मिलेंगे। बट जैसे हम बात कर रहे थे लास्ट मैच में, वी हैव सीन नॉर्थर्न नाइट्स ने क्या अपने जलवे दिखाए थे बाय बैटिंग एंड बॉलिंग, एंड डेफिनेटली दे पुल्ड अप 250 प्लस स्कोर। एक और काफी अच्छी बॉल, इसी के साथ ओवर की समाप्ति। बट यस, लास्ट मैच लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट 250 रन्स, 250 प्लस रन्स जो टीम ने बिल्ड किए थे, तो दैट वाज अ वेरी बिग टारगेट जो उन्होंने डेफिनेटली चेस किया था। इस बार भी अगर प्रोजेक्टेड स्कोर को अभी देखें, बिकॉज ऑफ द लास्ट फ्यू ओवर्स जो एक ड्रॉप रहा है उसके कारण द स्कोर इज 197 प्रोजेक्टेड। सो इसी के साथ वी आर बैक विद 7th ओवर एंड सात्विक इज द बॉलर। एक और बार स्वीप किया है हितार्थ ने। हितार्थ अगेन on the batting side, 35 runs with 26 balls played. And like we were talking about the projected score, जो projected score अभी चल रहा है, that is 193. But definitely we will be going in field, we will be talking to the audience to get to know कि उन्हें क्या लगता है today Northern Knights कितना बड़ा नंबर चेस कर पाएंगे। So इसी के साथ सेकेंड बॉल, एक और बार स्वीप किया, ये देखना पड़ेगा 4 मिलते हैं कि नहीं, और बहुत ही बढ़िया शॉट, सीधे 4 रन आते हुए हितार्थ के खाते में। सो हितार्थ ने लास्ट जो फ्यू ओवर्स हैं उसमें बिल्कुल चौकों की जो बौछार बचा रखी है, बहुत ही बेहतरीन। मतलब ही इज फुली प्रिपेयर्ड, ही हैज दैट माइंडसेट रेडी दैट ओके आना है, फील्ड को पूरा कॉन्कर करके जाना है। सो दैट्स रियली ग्रेट। अभी तक इस ओवर में 2 बॉलें हुई हैं और 5 रन आ चुके हैं। हितार्थ प्लेइंग एट 39, 50 रन इसी के साथ नॉर्थर्न नाइट्स ने भी पूरे किए हैं 7.2 ओवर्स में। अब थोड़ा सा स्पीड डेफिनेटली इंक्रीज करना पड़ेगा,
क्योंकि डेफिनेटली ओवर्स भी हैं हमारे हाथ में, विकेट्स भी हैं हमारे हाथ में। अर्नव को थोड़ा सा अब हो सकता है पुश करना पड़े, क्योंकि ऑलमोस्ट 15 बॉल्स खेल चुके हैं एंड सिर्फ 2 रन। सो अर्नव इज बैक ऑन strikes, so definitely we want to see some of the magic, some chokkies, chakke, some runs coming from Arnav's bats also now. Satvik Tiwari we have as a bowler, jersey number 29. एंड अभी तक इस ओवर की बात करें तो अभी तक आ चुके हैं 6 रन इस ओवर में 3 बॉल्स में। एंड सात्विक का दिस इज लाइक 4th ओवर। अभी तक टोटल उन्होंने जो रन दिए हैं वो है 11 और विकेट 0। सो डेफिनेटली अभी तक देखा जाए तो सात्विक का भी काफ़ी अच्छा ओवर रहा है, काफ़ी अच्छी लाइन एंड लेंथ का उन्होंने प्रयोग किया है। उसी के साथ चौथी बॉल ऑफ दिस ओवर, काफ़ी ज़्यादा लाइन से बाहर, काफ़ी ज़्यादा लाइन से बाहर। आई गेस वो जो हल्का सा ब्रेक मिला था दैट कुड हैव बीन द रीजन कि वो एक थोड़ा सा, डेफिनेटली वो बॉलर का जो माइंडसेट रहता है, एक लाइन लेंथ रहती है, वो थोड़ा सा हिल जाती है उस चक्कर में। बट लेट्स सी हाउ इट गोस। अभी तक इस ओवर में आ चुके हैं पूरे के पूरे 7 रन 3 बॉलों से। और इसी के साथ चौथी बॉल ऑफ दिस ओवर, अर्नव ऑन स्ट्राइक। फील्डर मौजूद वहां पे, कोई रन नहीं, डॉट बॉल एक और बार। अब हो चुके हैं 16 बॉलें और अर्नव ने अभी तक बनाए हैं सिर्फ 2 रन। सो 14 डॉट बॉल्स। थोड़ा सा अर्नव को थोड़ा सा गेम प्ले को टाइटन अप करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा अच्छे तरीके से कि हाउ दे कैन मेक इट मच बेटर, मच बिगर, और एक अच्छी खासी ये पार्टनरशिप को 100, 150, 200 तक लेके जाए। 5वीं बॉल इस ओवर की, अर्नव ने काफी अच्छा शॉट मारा है, या ये देखना पड़ेगा। 2 फील्डर मौजूद, काफी अच्छी फील्डिंग वहां, काफी अच्छी फील्डिंग। अपनी टीम के लिए पूरे के पूरे 2 रन बचाए हैं यहाँ पे, एंड डेफिनेटली काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। सो दोनों टीम्स को कुडोस। एंड लास्ट बॉल, अर्नव इज बैक ऑन स्ट्राइक। थोड़ा सा यहाँ पे दिखता हुआ कि अर्नव इज नाउ, एक वो जो था कि हाँ नाउ काफी बॉलें हो चुकी हैं, नाउ लेट मी गेट इट इन फॉर्म, वो दिखते हुए। काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे, ट्राई किया सेव करने का रन, काफी अच्छे रन बचाए यहाँ पे। 2 चौके अभी बैक टू बैक हमने देखा जो फील्डिंग के कारण बचे हैं, तो डेफिनेटली काफी इंप्रेसिव फील्डिंग भी होती हुई यहाँ पे। और इसके साथ 8 ओवर हो चुके हैं। द स्कोर बोर्ड इज एट 55 रन्स, 1 विकेट के नुकसान पे नॉर्थर्न नाइट्स। And looking at the current projected score, it's going to be 206. So definitely we will be going in crowd. We will be asking ki kya projected score today they think Northern Knights are gonna put on the board. And kya Rising Titans will be able to chase it, will be able to rise above that. So let's see how it goes. Going back to the 9th over now. And a back on strike. Pally ball. So again, if you look at the overall performance right now, so we can see that Erna has already played like 19 balls and Hitarth has already played like around 28 balls. So एक जो पिच पे रहने का टाइम होता है, जो एक getting comfortable to the pitch, that I think has already been done for both the players. So now they should be getting bit more aggressively instead of just like depending or defending the wicket. Now I think थोड़ा सा aggressive और हो सकते हैं, थोड़ा सा better try कर सकते हैं गेम प्ले, थोड़ा strategy change करने का। 3री बॉल इस ओवर की, अभी तक सिर्फ 2 डॉट बॉल रही हैं एंड इसी के साथ एक वाइड। थोड़ी सी ज्यादा स्पिन बाहर हुई है ये लाइन से। बट काफी अच्छी लाइन एंड लेंथ अभी तक। लवियांश द्वारा अगेन 3rd ओवर उनका। 4थी बॉल अगेन फील्डर के हाथों में। अर्नव इज ऑन स्ट्राइक। Lavyansh has been काफी successful as a bowler so far, but definitely very controlled run, very controlled run. Even अगर इस ओवर की हम बात करें तो सिर्फ एक वाइड ही है
जिसका रन मिला है, अदरवाइज 5 बॉलें अभी तक हो चुके हैं एंड ऑल हैव बीन डॉट बॉल. सो डेफिनेटली काफी इंप्रेसिव बॉलिंग यहाँ पे. एंड यहाँ पे पूरा फुल एनर्जी के साथ हैं. काफी अच्छी फील्डिंग, काफी अच्छी फील्डिंग. पूरा कोशिश की थी अर्नव ने कि लास्ट बॉल पे तो डेफिनेटली ही वांट टू लाइक नॉक इट आउट लाइक एनीथिंग, बट काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ राइजिंग टाइटंस द्वारा. With this, we are about to get started on our 10th over. थोड़ा सा प्रोजेक्टिव स्कोर यहाँ पे हिलता हुआ. इट हैज ड्रॉप टू 187. सो लेट्स सी कैसे चलता है यहाँ पे. बट वी आर प्रीटी मच कॉन्फिडेंट. अभी ऑडियंस का भी ओपिनियन लेना है हमें कि हाउ मच डू दे थिंक. इज इट गोना बी 200, इज इट गोना बी 250 प्लस, और इट्स गोना बी इवन मोर देन दैट. हितात बैक ऑन स्ट्राइक. एंड इस पर बॉलर में चेंज हुआ है. और यहाँ पे एक और मिस फील्डिंग. पीछे फील्डर मौजूद, देखना पड़ेगा रन बचते हैं कि नहीं. काफी बढ़िया फील्डिंग. एंड द बॉलर वी हैव इज प्रहान, जो उनका फर्स्ट ओवर है. 2 रन आए इस बॉल से, पहली गेंद से. एंड थोड़ा सा यहाँ पे मिस फील्डिंग का फायदा उठाया टीम ने. बट या डेफिनेटली काफी अच्छा शॉट भी था. और ये उठा के मारा है. दैट वाज अ फुल टॉस. नाउ वी नीड टू सी, एंड दैट्स अ सिक्स. That's a six. That's a six coming none other than from Hitat, which takes him to 42 runs at 30 balls. So yeah, very impressive. And अगर हम scoreboard की बात करें, the Northern Knights is at 65 and 48 runs have been contributed just by Hitat. So 42 runs. I'm so sorry, and that's so impressive. So impressive. अगर ये लास्ट शॉट को भी देखें तो काफी अच्छे प्लान वे में ही वेटेड फॉर इट एंड देन जस्ट टुक इट ऑफ. एक और बढ़िया यहाँ पे एक रन. काफी अच्छी स्ट्रैटेजी कि विकेट को रोटेट करते रहना है. दैट्स समथिंग नॉर्थर्न नाइट्स हैव बीन डूइंग, जो हमने लास्ट मैच में भी देखा था कि काफी इंप्रेसिव रहा है उनकी तरफ से. सो लेट्स सी. एंड विद दिस नेक्स्ट बॉल एंड कैच की अपील है. ओ, फील्डर के ऊपर से जाते हुए ये देखना पड़ेगा. एक चौका है, और ये चौका, एक और चौका आते हुए. एंड दिस टाइम दिस इज अर्नव. नाउ अर्नव इज गोइंग बैक. अर्नव इज लाइक रेडी. ओके, ही इज रेडी टू स्कोर, ही इज रेडी टू हिट मोर. काफी अच्छा शॉट था. थोड़ा सा फील्डर का अगर पीछे होते तो शायद कैच भी हो सकता था, बट भाग्य का साथ आज अर्नव के साथ. एक और बल्ला घुमाया है एंड फील्डर पीछे मौजूद. बट काफी अच्छा अटेम्प्ट यहाँ पे. 2 गेंदें बचते हुए टीम के पास अभी भी. डेफिनेटली यहाँ पे अब टारगेट नॉर्थर्न नाइट्स की तरफ से दिखता हुआ कि वो प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे हैं कि हर एक ओवर में 2 रन, 3 रन, 4 रन नहीं, बट एक जो स्कोर बोर्ड है, एक जो प्रोजेक्टेड स्कोर है, उसको पुश करना चालू करें. अभी जो प्रोजेक्टेड स्कोर पहुंच चुका है वो है 220. एक और बॉल, डॉट बॉल. लास्ट बॉल इस ओवर की, उसके साथ ही खत्म होंगे हमारे 10 ओवर. अभी तक रन बन चुके हैं 71. अब देखना पड़ेगा लास्ट बॉल में क्या आता है. ऑन स्ट्राइक इज Siddharth with 48 runs. क्या in this last ball we are gonna see a 50 by Siddharth, या हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा. आगे बढ़ के मारने की कोशिश, थोड़ा सा बल्ले पे स्लो बॉल की तरह आई वो, बट डॉट बॉल. काफी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे. हो सकता है हमें Siddharth के 50 के लिए अब नेक्स्ट ओवर तक का बस वेट करना पड़े, बट लेट्स सी हाउ इट गोज. 10 ओवर हो चुके हैं. काफी बढ़िया अभी तक परफॉर्मेंस रही है नॉर्थर्न नाइट्स की. सिर्फ 1 विकेट गवाया टीम ने, तो ये डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट है टीम के पास कि 9 विकेटें हैं. So we are back with 11th ओवर की पहली बॉल. अर्नव ऑन स्ट्राइक. पीछे फील्डर मौजूद. सिर्फ 1 रन मिलेगा यहाँ पे.
सेकेंड बॉल पे भी अगेन हिट करना चाहे, एक रन लेने की कोशिश, पीछे फील्डर मौजूद. So 49 पे हैं हितात. We still are waiting for his 50. Arnav playing at 11, 27 बॉलों के बाद. So अब अर्नव की जो हर एक स्ट्राइक के बाद एनर्जी दिख रही है, वो दिख रहा है कि नाउ ही इज रेडी. एक और चौका आता हुआ अर्नव के बल्ले से. सो इस ओवर में आ चुके हैं अभी तक टोटल 6 रन. कोई गलती नहीं टीम द्वारा. टीम इज फुली प्रिपेयर्ड, फुली रेडी कि जितना ज्यादा रन निकाल पाए उतने ज्यादा रन निकालने हैं आज. अभी भी 3 बॉल टीम के पास हैं इस ओवर में. अर्नव ऑन स्ट्राइक. अच्छी स्ट्रैटेजी कि हर एक बॉल पे शॉट नहीं लेना है, काफी कामली, काफी प्लान वे में इसको खेलना है. अभी 2 बॉलें पे रहती हुई टीम के पास. अर्नव ऑन स्ट्राइक अगेन. काफी अच्छा स्पिन यहाँ पे सीधा फील्डर के हाथों में. एंड अगेन लवियांश की अगर बात करें तो ये चौथा ओवर उनका चल रहा है, लास्ट बॉल जिसमें अभी भी रह रही है. एंड ही हैज जस्ट गिवन 22 रन्स. तो काफी अच्छी लाइन एंड लेंथ का भी प्रयोग किया है टीम ने यहाँ पे. लास्ट बॉल ऑफ द ओवर. एंड काफी अच्छा अटेम्प्ट अपील की गई है बट डिनाइड. बट अच्छी अपील थी. नाउ वी हैव हितात बैक ऑन स्ट्राइक. सो टीम का एक थोड़ा सा डिस्कशन होता है एम्पायर के साथ कि क्या ये मिलना चाहिए आउट की नहीं, बट एम्पायर डिक्लाइंड इट. बट अच्छी कोशिश थी क्योंकि दैट वाज लाइक ईदर वन ऑफ देम. कोई सा भी विकेट मिले टीम के लिए डेफिनेटली यहाँ पे फायदा होगा राइजिंग टाइटंस के लिए कि एक भी विकेट यहाँ पे उन्हें मिलता है तो दैट्स अ वेरी प्लस पॉइंट. क्योंकि जो एक पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है वो तोड़ना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि दैट इज ऑलरेडी एट 49. Once he crossed 50, there is no looking back. So that's for sure. Hitat on strike. उठा के मारा और इसी के साथ he completes his 50. So काफी अच्छा प्लान. एंड ओवरऑल अगर स्कोर्स की बात करें, इट हैज बीन 78 रन्स so far, जिसमें से 50 आर जस्ट contributed by हितात. So definitely as a captain जो contribution हितात ने दिखाया इस गेम में काफी काबिल तारीफ है. ओह काफी क्लोज था ये विकेट से, काफी क्लोज होके गया. 2 फील्डर मौजूद, डेफिनेटली कोई गलती नहीं यहाँ पे, सिर्फ 1 रन आएगा. बट काफी क्लोज था ये विकेट से, जिस स्पीड से जा रहा था. आई गेस एम्पायर वॉज ऑल्सो रेडी टू सी कि क्या ये विकेट में टच होगा या उसके बगल से निकलेगा. So Hitat back on strike after scoring his 50 just from 35 balls. And again एक डॉट बॉल. यहाँ पे टीम कोई गलती नहीं करते हुए आई गेस काफी स्लो एंड स्टेडी रखा हुआ है पूरे गेम को. अभी तक जहां मौका मिल रहा है वहां पे डेफिनेटली दे आर ट्राइंग टू हिट बिग, दे आर ट्राइंग टू हिट फॉर अ 4, दे आर ट्राइंग टू गो फॉर अ 6. बट ये नहीं है कि हर एक बॉल पे ही हिट करना है. सो डेफिनेटली अ गुड स्ट्रैटेजी, अ गुड गेम प्ले बाय नॉर्थर्न नाइट्स राइट नाउ. जैसे यहाँ पे पूरा उठा के मारने की कोशिश की गई है कि यस 1 से 2 रन आए. और काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे, काफी अच्छी फील्डिंग. काफी बेहतरीन. So Arnav back on strike with 16 runs so far. And Arnav में अब डेफिनेटली हमें दिख रहा है कि लास्ट जो कुछ बॉल्स उन्होंने खेली हैं, जो एक स्पीड अप किया है उन्होंने, काफी काबिल तारीफ. इब्राहिम इस पीछे फील्डर मौजूद, सिर्फ 1 रन आएगा इस बॉल से. बट ओवरऑल प्रहान ने अभी तक जो बॉलिंग की है इस स्पेसिफिक ओवर में काफी काबिल तारीफ. काफी कंट्रोल्ड वे में ही हैज ट्राई टू कीप द स्कोर नॉट गोइंग हाई. कोई चौका नहीं आया अभी तक, सिर्फ और सिर्फ 4 रन आए हैं. एक डॉट बॉल रही है, 5वीं बॉल इस 6ठी बॉल इस ओवर की. तो देखते हैं. उठा के मारा है हितात ने एंड ये है एक और चौका. सो टीम इज नॉट डेफिनेटली कोई गलती नहीं हो रही है हितात या अर्नव द्वारा यहाँ पे. नॉट द नाइट्स फुल पावर, फुल ट्राइंग टू डोमिनेट दिस गेम राइट नाउ.
So with this, the overall projected score has reached to 212 runs. And अब देखना पड़ेगा which particular bowler Rising Titans are gonna bring, क्योंकि अब एक जो है एक विकेट डेफिनेटली उनको चाहिए होगा. काफी देर हो चुकी है, काफी ओवर्स पहले एक विकेट गई थी. और ये जो पार्टनरशिप है ये धीरे धीरे दिख रहा है कि डेफिनेटली एक काफी अच्छा पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है यहाँ पे. सो वो जितनी जल्दी टीम तोड़ पाएगी उतना बेटर होगा. एंड द नेक्स्ट बॉलर वी हैव इज अनुराग, जो अपना पहला स्पेल डालेंगे, फर्स्ट ओवर डालेंगे इस इनिंग में. Northern Knight has already reached the runs 85, एक विकेट का नुकसान पे after 12 overs. Talking about the projected score, it has been 212. So कहीं ना कहीं भी वही 200 का एक रात चल रहा है in terms of projected score. But यही देखना है कि is it going to be more than 250 plus या 200. क्योंकि डेफिनेटली हमने नॉर्थर्न नाइट्स की परफॉर्मेंस पहले देखी हुई है. 200 के नीचे तो डेफिनेटली वी नन ऑफ अस शुड बी एक्सपेक्टिंग फ्रॉम देम. सो लेट्स सी. 12वें ओवर की पहली बॉल बाय अनुराग. एक और बार उठा के मारा है अर्णव ने. मिसफील्ड थोड़ी सी यहाँ पे, बट 4 आएंगे. काफी बढ़िया बाय अर्णव. काफी अच्छी यहाँ पे प्लानिंग के साथ प्लान वे में ही पुल दैट शॉट. प्रोजेक्टेड स्कोर को थोड़ा सा और पुश करते हुए अर्णव अपनी तरफ से भी. 21 रन्स 34 बॉल्स के साथ अर्णव अभी सेकेंड बॉल ऑफ द ओवर. काफी अच्छे तरीके से जस्ट एक डायरेक्शन दिखाई है. जस्ट ट्राइंग टू टेक अ सिंगल रन ओवर हियर. कोई गलती नहीं. स्ट्राइक को रोटेट करते रहो आप, चौके लो, देन जस्ट टेक अ सिंगल टू कीप ऑन रोटेटिंग द स्ट्राइक. तो काफी अच्छी स्ट्रैटेजी, काफी अच्छी प्लानिंग ऑलरेडी टीम ने यहाँ पे दिखा रखी है. थर्ड बॉल ऑफ दिस ओवर बाय अनुराग. डॉट बॉल, कोई गलती नहीं यहाँ पे. सो हितार्थ को भी अब डेफिनेटली अब एम करना पड़ेगा कि नाउ ही शुड बी पुशिंग इट मे बी फॉर स्कोर बोर्ड ऑफ 300 दैट ही कुड बी एमिंग फॉर. नो बॉल पहले ही डिक्लेयर कर दिया है एम्पायर ने. सो गुड स्ट्रैटेजी. यहाँ पे 2 की डिमांड हुई थी बट फील्डर ऑलरेडी आ चुका था एंड नो बॉल ऑलरेडी मिल चुकी है. सो यहाँ पे डेफिनेटली कोई गलती करने की जरूरत नहीं थी. तो गुड डिसीजन बाय द टीम, बाय द प्लेयर्स. एंड अर्णव इज ऑन स्ट्राइक नाउ. सो डेफिनेटली इस पे देखना पड़ेगा यहाँ पे प्लान क्या रहेगा इस वाली बॉल पे. थोड़ा सा प्रेशर डेफिनेटली अनुराग के ऊपर बिल्ड हुआ होगा. एक और नो बॉल का इशारा. यहाँ पे मिस फील्ड नहीं होना चाहिए. काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे. एक रन आए हैं बट यहाँ पे अनुराग थोड़ा सा प्रेशर में मे भी आते हुए. So Hitarth is now back on strike with 56 runs. उठा के मारे हितार्थ ने, कोई गलती नहीं इस बार. और ये डेफिनेटली चौका होना चाहिए. हल्की सी मिसफील्ड का यहाँ पे फायदा हुआ बट हितार्थ ने अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की. सही टाइमिंग थी, सही बॉल थी, सिर्फ डायरेक्शन दिखाना था तो वही किया हितार्थ ने. काफी अच्छी बैटिंग एंड काफी अच्छी लाइन एंड लेंथ के साथ डायरेक्शन दिखाई बाउंड्री के बाद. थोड़ी सी यहाँ पे मिसफील्ड अगर नहीं होती तो मे बी कैच आउट भी हो सकते थे. लेट्स सी. एक और बार घुमा के मार रहा है द सेम डायरेक्शन, सेम फील्डर, बट इस बार कोई गलती नहीं बाय द फील्डर. So let's see. With this, the team has already reached the score of 99 runs. एक विकेट के नुकसान पे, जिसमें से 61 have been contributed just by Hitarth. So let's see. And अभी इस ओवर की एक लास्ट गेंद बची हुई है. अभी भी एक सिंपल रन लेने की कोशिश, बट डॉट बॉल, सो ऑल गुड. सो इसी के साथ ओवर हो चुके हैं 13. द टीम हैज रीच्ड द स्कोर ऑफ 99 एक विकेट के नुकसान के साथ. सो काफी बेहतरीन अभी तक स्ट्रैटेजी, काफी अच्छी पार्टनरशिप बाय बोथ द प्लेयर्स अर्णव एंड हितार्थ.
but definitely we are expecting more for Arnav क्योंकि 37 balls have been there, so definitely एक जो विकेट को कंट्रोल करके रखना होता है, that has been the contribution given by him. But yeah, we definitely need more scores over the board. क्योंकि 200 we have seen that's an easy chase that have been done by the team early also, so we definitely want both the teams कि एक अच्छा खासा chase हो. 200 250 plus is the number we all hope for. So let's see, next bowler आ रहे हैं भाविक. Again he's gonna put up his first spell. Right now rising titans are definitely trying, every bowler are trying every weapon in their arsenal कि ये जो partnership है ये कैसे ना कैसे करके they are able to break it. So let's see. बस एक step होना भाई बस First ball of this over, बस ये good run one. मार कर लो मैं यहाँ पे रह लूंगा सिर्फ एक रन पहली बॉल से, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गलती नहीं. 100 रन इसी के साथ टीम के कंप्लीट हो चुके हैं नॉर्थन नाइट्स के. कवर घुमा के मारे, है एक हल्की सी मिस फील्ड बट लकली अच्छी कोशिश थी वहां पे, तो 4 तो डेफिनेटली बचाया है टीम प्लेयर ने. But definitely we want to congratulate Northern Knights for completing 100 runs in just 13 overs. भाविक बॉलर यहाँ पे थोड़ी सी लाइन मिस होते हुए, बट अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा. एंड विद दिस फोर्थ बॉल अभी तक इस ओवर में सिर्फ 3 रन आए हैं, 3 सिंगल्स, तो काफी अच्छी स्ट्रैटेजी. एंड इट्स अ वाइड. प्लान वे में काफी अच्छे तरीके से थोड़ा सा राइजिंग टाइटंस को समझना पड़ेगा विच बॉलर विच पर्टिकुलर वेपन दे कैन यूज टू ब्रेक दिस पार्टनरशिप. एक और बार उठा के मारने की कोशिश है, और बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे, कोई गलती नहीं फील्डर द्वारा. डेफिनेटली थोड़ी बहुत मिस फील्डिंग हमने यहाँ पे देखी है, बट काफ़ी अच्छा कुछ कुछ शॉट्स हमें देखने को मिले हैं, कुछ कुछ फील्डिंग के मोमेंट्स हमें देखने को मिले हैं. दैट हैज़ बीन वेरी इंप्रेसिंग बाय राइजिंग टाइटंस. एक और बार उठा के मारा है बट लैंडेड ऑन नो मैंस लैंड. सो अभी तक इस ओवर में 5 बॉलों में टीम ले चुके हैं 6 रन ऑलरेडी. लास्ट बॉल बची है, सो लेट्स सी. प्रोजेक्टेड स्कोर को थोड़ा सा पुश कर करके टीम हैज टेकन इट टू 228, और ये 14th ओवर की लास्ट बॉल. सो लेट्स सी. अर्नव ऑन स्ट्राइक एंड काफी दमदार शॉट, ये देखना पड़ेगा. काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे, काफी अच्छी फील्डिंग, कोई गलती नहीं हुई. एंड जैसे हम बात कर रहे थे, दीज आर द लिटिल मोमेंट्स दैट वी हैव बीन सीइंग. एक आधा मिस हुआ है डेफिनेटली, बट राइजिंग टाइटंस हैव बीन ट्राइंग टू गिव देयर 100%. जहां पे चौका रोक सकते हैं, जहां पे 1 रन 2 रन रोक सकते हैं, दे हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग देयर 100% फॉर श्योर. सो इसी के साथ 15th over is about to get started. We want to see which bowler the team is going to bring again. It's Anurag again. लास्ट ओवर थोड़ा सा महंगा पड़ा था अनुराग के लिए, तो इस ओवर में देखना पड़ेगा हाउ इट गोस. अर्नव ऑन स्ट्राइक, 1 रन लिया, कोई गलती नहीं यहाँ पे. उधर को नीचे दूसरी बॉल घुमा के मारा है, यहाँ पे हल्की सी मिस फील्ड, पर पीछे फील्डर मौजूद. काफ़ी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे. तो जैसे बात हो रही थी कि काफ़ी मोमेंट्स हमने देखने को मिले हैं जहाँ पे राइजिंग टाइटंस ने काफ़ी सारे 4 रन बचाए हैं, काफ़ी सारे 2 रन को कन्वर्ट होने में रोका है, सिंगल्स तक बचाए हैं, तो ये काबिल तारीफ डेफिनेटली. एक और बार काफी बेहतरीन फील्डिंग बाय द टीम. Hitarth is playing at 64 with 46 balls played so far.
तीन और एक और बार नो बॉल का इशारा और पहले ही उठा दिया था उसे हवा में। कोई गलती नहीं यहाँ पे हितार द्वारा भी और ये डेफिनेटली एक सिक्स है। हितार्थ पहुंचते हुए 70 के स्कोरबोर्ड पे। तो यहाँ पे हितार्थ ने प्लान ऑलरेडी कर रखा है कि कोई गलती नहीं होगी, जहां मौका मिलेगा 4 को 6 ही बना के छोड़ेंगे आज। सो 2 बॉल अभी भी रहती हुई इस ओवर की बिफोर वी हिट द 15 ओवर्स ऑफ दिस गेम। एक और बार काफी प्लान वे में और एक और मिस फील्ड का यहाँ पे फायदा उठाते हुए 4 रन। हितार्थ ने आज प्लान किया है कि आज तो 100 मेरे को ही लेके जाना है। आई हैव टू पुट दैट 100 ऑन द बोर्ड। जर्सी नंबर 1-2 हितार्थ back to back एक छक्का, back to back एक चौका। So that's what we have been talking about। काफी महंगा ओवर साबित करते हैं अनुराग का। अभी तक इस ओवर में टोटल आ चुके हैं लास्ट बॉल ऑफ दिस ओवर हितार्थ स्टिल ऑन स्ट्राइक विद 74 रन्स। एक और उठा के मारा है। पीछे देखना पड़ेगा फील्डर द्वारा काफी अच्छी फील्डिंग। So, कुछ कुछ कहीं कहीं पे तो डेफिनेटली टीम ने मिस किया है बट अगेन राइजिंग टाइटंस हैव बीन ट्राइंग टू गिव अ गुड competition to the team। So इसके साथ 15 ओवर्स की समाप्ति। A mid break for the team। बट ओवरऑल अगर अभी तक की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 118 रन एक विकेट के नुकसान पे है नॉर्थर्न नाइट्स। काफी अच्छा अभी तक का गेम प्ले रहा है टीम द्वारा। अर्नव इज एट 27 रन्स 42 बॉल्स से एंड हितार्थ इज एट 75 रन्स 49 बॉल्स से। सो काफी अच्छा गेम प्ले बाय
So, hi everyone, this is MC Agranshu, and we are back in the game again. And currently, अगर scoreboard की बात करें तो Northern Knights is at 16 over 138 runs, एक विकेट के नुकसान पे, and we have Hitarth playing at 95, Arnav playing at 27. Talking about the current projected score, it is 259. So let's see how it goes. The player who is bowling right now is Atharva, and that's his first over. So let's see. So second ball of this over, अभी तक दो डॉट बॉल्स आ चुकी हैं और एक हल्की सी मिसफील्ड का डेफिनेटली यहाँ पे फायदा उठाते हुए अर्नव एंड हितार बोथ. कोई गलती नहीं, फुल ऑन समझदारी यहाँ पे चल रही है दोनों टीम प्लेयर्स के बीच में. एक जो साझेदारी यहाँ पे बन चुकी है, that is something rising titans definitely need to make sure they are able to break it. So Hitarth playing at 95 runs 55 balls के बाद. So definitely we want to see क्या उनके 100 इसी ओवर में होने वाले हैं. Yeah, we have to wait for a while. अच्छी fielding but good running between the wickets as well. So with this, the projected score is at 254 runs. We have Arnav back on strike with 28 runs. 140 is what Northern Knights are standing at currently. Ek appeal, but rejected by the umpire. Let's see it in slow motion, real quick. थोड़ी सी लाइन से बाहर थी. A good call by the umpire. But इस बार अर्नव ने कोई गलती नहीं की और चौका सीधा अर्नव के बल्ले से. So we can see that the team players are ready. So with this, the current score is 144. Northern Knights sitting at 16.5 overs, 144 score run, 1 wicket का नुकसान पे. Current run rate is 8.57. The projected score is 257. The players we have is Arnav playing at 32, Hitarth playing at 96. Last ball of this over. So far, we have got 6 runs out of this over. Good strike by Arnav. Let's see. Fielders already present, so maybe sirf ek run they should be able to get. But yeah, overall 17 overs के बाद the scoreboard is at 145 runs, 1 wicket को नुकसान पे. Projected score is at 256. So definitely all of us are super excited, super ready to see Hitarth first of all hitting his 100. And we all are excited and hoping that it should be happening within this over. So talking about Hitarth's performance, he's sitting at 96 runs with 56 balls played so far. And let's see who's the next bowler we have over here. Jersey number 25, Bhavik. That's his third spell. And that's a very marvelous strike played by none other than Arnav. The fielder was chasing it, but he kept chasing the ball. And that was a marvelous four by none other than Arnav. So Arnav is definitely going back in form. He's like, okay, मेरे को वो 100 runs जो last match में किए थे, I'm chasing those particular numbers again. So great partnership so far we have seen by Arnav and Hitarth. And with this, the team has got it to 149 runs, 1 wicket को नुकसान पे. So we all are excited to see the 150 happening. Next ball. Again, a good strategy by the team, just taking the singles, keep rotating the strike over here. And Hitarth is back on strike with 96 runs on the board. And that was an impressive ball. And with this,
It's Siddharth, you guys, who has scored 100 runs on the scoreboard in just 57 deliveries, in just 57 balls. 100 runs by Siddharth. And definitely we would like to acknowledge this also. Talking about Northern Knights, they have made 154 runs, out of which 100 have been just contributed by Siddharth. So super impressive performance by the team captain over here. And talking about the present scoreboard, talking about the present runs out of this over, 9 रन आ चुके हैं अभी तक इस ओवर में, 3 गेंदें अभी भी बचती हुई. So let's see. Fourth ball of this over. Good attempt by the team, but again a misfield happening over here, and that should be a 4. Another 4 coming directly from Hitar's bat. Taking the scoreboard to 104. Talking about the Northern Knights, it's 158. And if we talk about the projected score, 268 runs. And this is what we have been talking about. These are the small misfield. So definitely team has to make sure that they are reducing it. Fifth ball of the over. Just trying to rotate the strike. काफी अच्छी strategy यहाँ पे. हल्की सी misfield, but again एक ही रन आता हुआ बल्ले से अभी तक. And now we have Arnab back on strike. 38 runs. Jersey number 1. Last ball of the over. And that's a wide. There was an appeal by the keeper and the bowler of out, catch out, but no, that was not accepted. अभी तक इस ओवर की बात की जाए तो अभी तक आ चुके हैं 3 चौके इस ओवर में, 2 singles, 1 wide ball. So overall run is 15 so far from this particular over, and इसके साथ 1 ball still रहती हुई. On the back on strike, and that was a good strategy. Again, they tried to take 1 run out of the misfield. So with this, everyone, after 18 overs, the score is 161 run, 1 wicket ka nuksan pe. Hitar sitting at 105 runs, 59 balls mein, and Arnav sitting at 39 runs, 50 balls pe. And definitely we want to acknowledge, appreciate how much contribution has been given by Hitar, the captain, scoring 105 runs. So let's see a choti si jhalak of his performance, of the 100 that he has scored. Jersey number 1-2. 19th over की पहली गेंद. Again LBW की अपील थी यहाँ पे. We can really see Rising Titans trying to break this partnership somehow, trying to pull out that a single wicket. That is the breakthrough that they really need right now. Because we have already seen Arnav's performance in last match. Once he is able to, like 50, 60, he's already there, he won't be stopping before 100. Again, good strategy by both the batsmen that they are keep on trying to rotate the strike. And not on every ball they are trying to make runs. So काफी हद तक good strategy. Again, the projected score, they have been trying to maintain it to 260 plus from past couple of overs. So that's really impressive. Good fielding यहाँ पे. Very great fielding by the team members. At the same time, good running between the wickets as well. दो बॉल रहती हुई इस ओवर की. A throw of jersey number 25 as a bowler. And then on strike we have Arnav with 40 runs from 53 balls. And very close call, but a dot ball. And इसके साथ last ball of this over.
and आगे बढ़ के बढ़ने मारने की कोशिश थी, but again a good dot ball. So very impressive over by Tharwa, just contributing 2 runs so far from this particular over. With this, the scoreboard has reached to 163 runs with 1 wicket down. They still have 11 overs left with them. The current projected score is 257. But we all know that if both the batsmen, that is Arnav and Hitat, are gonna stay longer on this ground, they gonna definitely hit bigger and better than what is we are projecting right now of just 257. So the next bowler we have is Gaurav Yadav, jersey number 26. First ball of his over. Again, great running between the wickets, not trying to miss any opportunity to convert into runs. Hitat is back on strike, 106 runs so far. Now we can start seeing some kind of tiredness definitely on Hitat's face and Arnav's face as well. Both have played almost like 60 balls just this over. So that has been like thoda thoda ek do behead. Talking about the weather also, it's pretty much pleasant. But yeah, again, if you keep on playing like these 10 overs back to back, it will be a stressful. So थोड़ी थोड़ी एक थकान दिखने लगी है and Rising Titans might be just looking forward for this particular moment जहाँ पे वो एक partnership को break कर पाए and they should be able to get 1 wicket. But abhi tak, looking how they both have been doing, just trying to rotate the strike, कोई गलती नहीं कर रहे हैं, not trying to play any bigger shots, not trying to do any kind of mistakes, any run outs or anything like that. So काफी impressive partnership यहाँ पे. और यहाँ पे उठा के मारना है हितात ने, trying to break the thing. And that's a 6 by Hitat, everyone. Taking the scoreboard to 113 runs at 62 balls and taking the scoreboard for Northern Knights at 173 runs with 1 wicket down. So with this 2 balls left, fifth ball of the over. Again, Hitat is like pretty aggressive now, and that was very close. That was very close. That could have costed definitely 4 runs to the team. The team need to be making sure that ऐसी छोटी छोटी mishappening should not be happening. They need to be very careful with this. Last ball of the over again. Try to hit it very hard. A fielder is already at the back. So सिर्फ 1 run. After 20 overs, the runs are 175 runs with 1 wicket down. The bowler we have is Atharv, jersey number 25. On strike, we have Arnav, jersey number 1, with 43 runs on the board. And try to play it in very smartly, just trying to rotate the strike from past couple of overs. कोई गलती नहीं कर रहे हैं यहाँ पे दोनों players. They are just trying to keep on rotating the strike, just trying to pass on couple of overs ताकि at the end of the overs they can show the real magic of fours and the sixes. Whereas Rising Titans definitely, if they are planning to rise above Northern Knights, they definitely need to break up this partnership right away in next 1 or 2 overs, because as soon as they're gonna cross 22, 23 overs, they're gonna definitely bombard with all the fours and the sixes they have in their arsenal.
So let's see how it goes. Projected score has been rising enough so far. We have got the projected score of 257 runs. So with the current run rate of 8.63. A bit of a misfield again over here, but luckily the ball speed has been slowed down. So itna nuksan nahi. Again, there was a demand for a two, but good call out not to run for that. Overall, good over. 5 balls down. We are just have 3 runs on the board from this particular over. Last ball of this over. And Hitat, he's not ready. He is just ready to hit the fours and the six. But one bounce, it was straight to the fielder. But again, great performance so far by both the players. And this is the kind of a difference we definitely want to acknowledge over here. If we look at how many balls have been played by both the players, Arnav have played 62 balls, Hitat has played 65 balls. And talking about the runs, Hitat has scored just double of that. 116 guys, so that's a big contribution to the scoreboard. So 9 overs is what we have left. Scoreboard currently Northern Knights sitting at 179 runs with 1 wicket down. Arnav playing at 45 with 62 balls. Hitat playing at 116 with 65 balls. And now we have 22nd over. First ball happening, but the jersey number 15, Gaurav Yadav. Overall, he has put down 1 over with 12 runs. So let's see how it goes. First ball of this over. And that was outside edge. Rising Titan should have put up a sleep over there. That could have scored a wicket for sure because अब सिर्फ और सिर्फ एक strategy that Rising Titans should be thinking of how to break up this partnership. They definitely want to break that. I'm so sorry. The bowler we have is Lavyansh, jersey number 15. Again, a sweep by the team, just trying to rotate the strike. कोई गलती नहीं है यहाँ पे. Just converting those not so good balls into fours and sixes, and whereas just keep rotating the strike with the singles so that the bowler can also feel that pressure. And again, a very great sweep by the team, but fielder वहाँ मौजूद सिर्फ एक run. But again, good running between the wickets also. They have been playing almost 60 plus balls, and still you can see that they have not given up so far. Hitat on strike. Again, a very impressive batting by him, a very impressive four coming directly from Hitat's bat. So coming back to the scorecard now, we are sitting at 185 runs with 1 wicket down. Hitat is on strike, and एक और बार घुमा के मारा है. Let's see how it goes. A bit of a misfield, but again, taken care by the player. So we are left with just one single ball now of this particular over. Arnav on strike. 4 runs away from his half century. And now with 3 runs away. So one player's playing and sitting at 122 runs. Another player sitting at 47 runs. So that's the contribution. That's the spirit. We have been talking about Northern Knights, and they have been delivering it like anything. And in the meanwhile, definitely we want to acknowledge and appreciate all the partners we have, starting with Youth Affairs and Sports, Ministry of Youth Affairs and Sports, definitely acknowledging all the contribution done by Physical Education, Ministry of India, then appreciating Satya Homes for being our partners. And now we are left with 8 overs. Now that's the strategy. We definitely want to see what should be going on in Northern Knights' mind. Are they still aiming a target of 250, or is it more than that now? Maybe definitely this idea will be
wickets ek bhi na gire. Let's keep on rotating the strike. Let's see if we can take it till like 25 overs and then we can just go bombard with 25, maybe like 30 runs every over. But a good strategy by Atraf. He tried to step out the second player on another strike, but missed. And that's a mistake, but it landed on a no man's land. भाग्य थोड़ा साथ दे तो यहाँ पे नॉर्थन नाइट्स का fortune. Let's see that in a slow motion. That was a very close ball, very close ball. But again, two fielders running for the same ball but missed. And ये miss कितना भारी पड़ने वाला है, Hitat is definitely gonna show. So let's see how it goes. Oh, that was hitting his own team player. But it was very impactful shot by Hitat. Right now, we are more excited to definitely see the Earners 50 happening. First match 100 plus, second match 48. Hitat 122 run guys. But so far, अथरफ ने काफी जो एक मोमेंटम बना होता उसको काफी कंट्रोल डाउन किया है और रन्स को काफी ज्यादा कंट्रोल डाउन किया है. इस ओवर सिर्फ अभी तक एक रन आए हैं एंड दिस इज द लास्ट बॉल वी हैव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ओवर. Hitat not trying to give up so easily, definitely trying to rotate the strike. So with this, guys, we have 23 overs so far. The current scoreboard is 189 runs, 1 wicket down. Northern Knights, Arnav playing at 48 runs, that's 65 balls. Hitat playing at 123 runs with 74 balls. Talking about the current run rate, it is at 8.22. And talking about the projected score, that has reached 247. So let's see how it goes for the remaining 7 overs. The next bowler we have is jersey number 15. First ball of this over. Again, now Arnav is not gonna stop, and that's a 4. And very impressive 4 by Hitats. Taking the score to 127. Northern Knights sitting at 193. कैच करने की यहाँ पे कोशिश की थी डेफिनेटली बॉलर ने एंड दैट्स अनदर वन. Now Hitat is going back in form. He has been doing magic so far, but now he's not gonna. Two back-to-back fours we have got so far from this over. Hitat sitting at 131, Northern Knights sitting at 197, and that's a wide. Northern Knights reaching at 198. Super excited to see the scoreboard reaching 200 ASAP. So let's see. अभी तक इस ओवर में आ चुके हैं टोटल 9 रन. Third ball of the over. And Hitat is definitely having the mindset now that every ball he's gonna hit like a 4 or a 6. But that was a bit miss. Safe ball and bat ka connection here. But good strategy to rotate the strike, giving back to Arnav. With this, Northern Knight is at 199. Arnav is at 48. So let's see, guys, everyone. And a bit miss. And let's see, that's a 1 run coming in for sure. Making the scoreboard reaching 200 runs for Northern Knights with 1 wicket down in 23.3 overs, everyone. And we have Hitat back on strike with 132 runs. And good strategy again. But that was a dot ball. So far we have got like 2 fours, 2 singles and a white ball from this particular over with the dot ball again. So last ball of this over. And again, impressive shot by him. But a fielder is already at the bag, so most probably just getting 1 run out of this.
So with this, everyone, we have done with 24 overs, 6 overs more to go. But the scoreboard is sitting at 201 runs, just 1 wicket down. Projected score on the board is 251. Arnav's sitting at 49. Hitaj sitting at 133. Belly ball is over key. And let's see if it's gonna be a 4. And that's a 4, everyone. So Hitat definitely not missing anything. Trying to take the scoreboard to more than 250 plus for sure, but adding something for his scoreboard as well, maybe 150 or more than that. So let's see. And that's again an impressive hit. Like we said, Hitat is not stopping. He's not stopping at all. Today, when he got up, he had a maqsad, he had an agenda in his mind that he's gonna definitely hit 150. And we are super excited. One batsman sitting at 141, another one at 49. So let's see. Another impressive hit by Hitat, and that's a very close one. We definitely want to see is it a 4 or 6, and that's a 6, everyone, taking him to 147 runs at just 82 balls. He planned it, he aimed it, and he hit it. A very impressive 6 by Hitat. The overall scoreboard is at 215. Hitat sitting at 147 runs. Another massive hit. Tried to make it big, but straight to the fielder. Maybe just getting 1 run out of this. But we have another star on the strike now. Arnav sitting at 49 runs. So let's see if it's gonna be his half century again. Straight to the fielder, just a dot ball. First dot ball of this particular over. So far, we have already got like 15 runs out of this over. Last ball of the over. Straight to the fielder. There was a call for run, but good decision by both the team players. Koi galti nahi karni hai. You still have like 5 overs just for single run. Let's not make any mistake. But very impressive batting, very impressive partnership so far by the team players. After 25 runs, the team Northern Knights is sitting at 216 runs with 1 wicket down. Arnav sitting at 49 runs with 68 balls. Hitat sitting at 148 runs with 83 balls. The projected score is at 259. So this over is going to be pretty massive. Let's see if both the players, one of them is going to hit his 50, another one is going to hit his 150. So let's see, everyone. Let's go. First ball of the over. And let's see if it's going for a 4. If it's going for a 4, and that's a 4, everyone. And with this, Hitat hitting 152 runs out of 83 deliveries. Super impressive game. Out of 216 runs, this particular player has already contributed like anything. And that's a bold. Bit disappointed with himself. He thought that after hitting 152, that was something he was definitely not expecting. But Rising Titans, this is the moment they have been waiting for. But a very impressive, definitely inning by Hitat. Out of 220 scores that Northern Knights have, 152 have been just contributed by none other than Hitat, the captain, giving his 100% for sure. थोड़ा सा यहाँ पे miscalculation हुई. Otherwise, if it had been corrected, that could have been a 6 for sure. But now that's the strategy. We are pretty much sure Arnav is gonna have his half century, and let's see how much they're gonna add more to the complete scorecard.
So let's see again. Very, very calculated bowling over here and halka sa miss hua tha. Thoda sa disappointed definitely Hitat was. He was expecting it to be given like a no ball or something, but nevertheless, 152 innings. That's very impressive. And the next batsman we have on strike is Abudya. So let's see. The bowler we have is Harman. That's his first over. Third ball of this over. Again, very impressive line and length by the team. And the moment we all have been waiting for a while now, Arnav back on strike with 49 runs on the scorecard. And let's see, with this, another guy scoring 50 from the team. That's Arnav, everyone, scoring 50 runs. Jersey number 1. Again, the team has been towards us, just trying to rotate the strike and everything. But again, Rising Titans just need to make sure maybe they are repeating Harman or Harman को पहले लेके आना चाहिए था उन लोगों to break this partnership. But again, good call out by the keeper over here, but not given. So with this, after 26 overs, the scoreboard is at 2-3 with 2 wickets down. Arnav sitting at 50. Abudya sitting at 2 runs. And the projector score has reached to 257 runs. With 4 overs more to go. Abudya, jersey number 44. And the next bowler we have is jersey number 25. And in the meanwhile, we will definitely like to acknowledge our partners who has been contribution and making everything possible, especially for this particular event, starting with Shanship Botanics, CETA's Foundation. And that's an impressive hit by the player. And that's a 6. Very impressive hit by the player. Let's see that again in slow motion. And that's a bit there. आगे बढ़ के खेला एंड काफी अच्छी हाइट एंड लेंथ के साथ. There was a fielder available. He tried to grab it, but again, it was already out. Good strategy to keep on rotating the strike after hitting a 4 or a 6. So good strategy by the team. Again, a massive hit by the player, and that's a 4. That's a 4. कोई गलती नहीं यहाँ पे हो रही है टीम द्वारा. Very impressive game by the team players. Very impressive. On a back on strike with 54 runs down. Three balls still left in this particular over. Again, a good strategy to keep on rotating the strike. 4 बॉल में अभी तक 12 रन आ चुके हैं इस ओवर में. 2 गेंद अभी रहती हुई इस ओवर की. Again, impressive strike. And if you are talking about the bowler so far, that's a 6th over. A third 43 runs have been came out of his over. And again, a massive hit. Impressive hit. And that's a 6 coming directly from Arnav. Now, definitely, we want to see the last couple of overs, bache hain. Arnav, Kya Prahar, and even both the batsmen. What kind of, like,
great attacks and everything we will be seeing from their side. क्या ये लास्ट 3 ओवर में सिर्फ चौके छक्के हम लोग को देखने को मिलेंगे या it could be some of a game strategy from Rising Tiding as well. Eventually, they were able to break the partnership, but again, there is another partnership that we can clearly see building up. और जो बिल्ड होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया है टीम ने बिकॉज द प्रोजेक्टर स्कोर हैज रीच टू 269. We have jersey number 5 back as a baller, so let's see how impressive and how quickly he will be able to maybe break this partnership or Northern Knights के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा. So first ball of the over उठा के मारा है by. And that's a 6. Super impressive. The team is ready. Ki last 3 overs, koi galti nahi. We have 8 wickets on hand. So let's see how big and how faster we can score. Very impressive batting. Pura planned way mein, he just gave it a direction. Very impressive batting by Abudya. Again in the same direction. Let's see. But landed in a no man's land. Fielder पीछे मौजूद. Just able to take a run, but good strategy again to hit a 6, hit a 4, rotate the strike, keep the pressure on the baller side only. And that was impressive by Harman again. He took the two main players who contributed the biggest, but again, a very impressive performance by Arnav. And let's see that again in slow motion. A very impressive line, a very impressive line. It was a bit of a slower delivery. Arnav was not able to read it correctly. उन्हें लगा तो थोड़ी सी ऊपर आएगी, and that's where the baller played his game. Very impressive bowling by Herman. But again, a very impressive batting line by showed by two main players so far, Hitarth and Arnav, contributing great to the scorecard. And with this, Northern Knights have already reached 249 runs with 3 wicket downs. They are left approx with 15 balls on hand. So let's see, next 15 balls, what all magic they're gonna drop. And the next batsman we have on the field is Jairaj. So far, if we are talking about this particular over, and especially about Herman has been very, very like lucky for Rising Titans. Maybe उनको पहले लेके आना चाहिए था Rising Titans को because this is his second spell, second over. He has already taken out the two biggest batsmen, जो all the players, all the bowlers were trying to do and were not able to do. So fourth ball, first ball played by Jairaj. Just a single run, strike rotate, good strategy. कोई गलती नहीं है यहाँ पे. 2 balls more to go. And with this, Northern Knights have reached the scoreboard of 250 runs with 3 wickets down. Fifth ball of the over. And a bit of a misfield. That's are the small things that are definitely gonna cost big to Rising Titans. Impressive 4 runs by Abudya. Koi galti nahi, proper planned way mein he just shot the ball in the right direction. Fielder se thodi si misfield yahan pe, and it added to the scoreboard for sure. 254 runs, 3 wickets down. Last ball to go by Herman. Again, एक घुमा के मारा है. Let's see if it's gonna be goodly fielded. Great, impressive. So with this, we are done with 28 overs, 255 run.
And with this, we are back again. दो balls हो चुके हैं इस ओवर की so far. We are still left with 10 balls to go. Jairaj on strike. The scoreboard is at 256 runs already, so let's see how much extra, how much additional run the team will be able to contribute today. With this fifth ball of the over, Gerard still on strike, and that's a no ball. Again, adding one run to the scoreboard. With this, we are left with the last ball of this over. 257 runs, Gerard still on strike. There was a call from Gerard to take a run, but denied by Abudya. Abudya already sitting at 23 runs. Last over. So most probably Abudya will try to keep the strike on him only कि last over में last जो 6 गेंदे हैं उसमें maybe he can contribute more by just hitting the fours, just hitting the sixes. क्योंकि the scorecard is already at 257. They have done good. Last time in the last match they have already made like 259. So एक same scorecard को वो लोग chase कर चुके हैं. The same has been already replicated. So with 6 balls back in hand, let's see what will be the strategy. But we have the star bowler, Harman, jersey number 5. So let's see. First ball of the over. Again, very impressive hit. there. पीछे फील्डर मौजूद, यहाँ पे कोई गलती नहीं हुई. 4 रन डेफिनेटली बचाए अपनी टीम के लिए. But again, we are left with 5 balls. So let's see कितना impressive हो सकते हैं ये next 5 balls. Just a run. Again, dot ball. कोई गलती नहीं यहाँ पे players करते हुए. Just trying to keep it very straightforward. क्योंकि डेफिनेटली लास्ट 4 बॉल बची हैं. रन लेने की कोई जल्दी नहीं है, कोई गलती नहीं यहाँ पे करनी है. Third ball of the over. Again, not trying to make any run over here in the last ball. Just trying to get those fours, those sixes. And that's a good strategy. Herman on the bowler's end. Fourth ball, again, a very impressive bowling. And finally, एक run लेते हुए. And with those 2 balls left, we have Jairaj back on strike. काफी इंप्रेसिव उठा के मारने की कोशिश है. 2 फील्डर्स मौजूद. And good strategy by the team. And with this, we are just left with the final ball.
So let's see what magic gonna happen. The last ball of this over. And that's a four, guys. That's a four. Joe, first ball says, try kar rahe the team to get it. They finally got, and the last ball, but very impressive. Definitely, first of all, inning by Northern Knights with the score. So, very impressive innings by Northern Knights with a great score. The kind of graph you can see over here कि starting के overs में जो एक wicket गिरा था like in first third over उसके बाद there was only wicket happening on like 26th over and then like 28th over and again जो last के दो impressive थे that was mainly by the team. Talking about the dot balls, they were like approx 70 dot balls done by the team. Talking about singles, it was approx 69 singles that has been done by the team. Talking about twos, it has been like around two. Talking about fours, that has been 30 fours. These चौके मारे गए हैं इस game में. And let's see the overall score again. Six. They have been hit 8 sixes so far. Extras 19 run extra दिए हैं by the Rising Titans. And if we talk about the most creative over, that has been 16th over जहाँ पे 20 रन आए थे. उसके अलावा 27 over was another one जहाँ पे 19 runs आए थे. And then we have over number 10, we have over number 18 जहाँ पे approx 15 to 16 the team did. But again, the third over जहाँ पे wicket भी गया था, that was also impressive. Wicket था, but again, it gave around 15 runs. So now, most probably the team, Rising Titans, what kind of strategy, what kind of plans they gonna bring in now to make it happen? The team need 258 runs from 180 balls. So let's see how it's gonna go. So stay tuned with us for none other than Emerging Stars Champions Trophy. This is at MCA Grand Show. We will be connecting soon. Thank you.
Hi everyone, this is MC Agranshu and welcome back to Emerging Stars Champions Trophy Season 1. This is day 2 and we have a very dashing personality with us, Mr. Wasim, who is the coach for Northern Knights, who has been dominating the game. Definitely the first one they dominated, they won the first one. And today also, we have seen the first half of the inning. They have already put up 258 scores on the scorecard with two main players, one of them hitting 50 plus, another one of them hitting 150 plus. So definitely we want to speak to Mr. Wasim. Want to understand, sir, क्या strategy रही है, how you have been training the guys, anything about their gameplay. So yeah, sir. First of all, I'd like to thanks organizer. They organize a wonderful event for the kids. And yes, जैसे आपने मेंशन करा हम पहला मैच हम जीत चुके हैं टूर्नामेंट का. सेकंड मैच में भी फर्स्ट हाफ में भी डोमिनेट एंड व्हाट अ इनिंग बाय हितार्थ. He is a brilliant knock. And today he according to me he's missed 200 run, but 153 is a good total. Yeah. Great, sir. Great. And what's the strategy for the complete entire series? Are you planning ki yahi like first you guys will be trying to bat first? या always ये strategy रहेगी 250 plus का जो एक benchmark आप लोगों ने set कर दिया है क्या वो हमेशा continue रहने वाले है आगे के games में भी? Honestly speaking, if we won the toss, we decide to field first because of the wicket and ground condition. But we lost the toss and we have to bat. But boys played brilliantly and the plan is simple. But just play fearless cricket and try to give our best. That's it. Great, so great. And any point in the game today, you felt like okay, काफी slow start हुई है, but initially like we've also all of this I think felt कि थोड़ी सी slow start हुई है, but eventually जो एक rhythm पकड़ी थी team ने, they kept on doing the singles, they kept on rotating the strike. So anything particular you want to highlight कि team ने ये चीज best किया that has given them the result. No, we have very good side. Auction में बहुत अच्छा team pick करा है. We have very good batsmen and they know each other very well. And if you see, we got one wicket early, but Arav and Itan played brilliantly. They know each other. They take singles and they rotate the strike and every ball they try to take two boundaries. And I just give a message, just calm down and play throughout the inning. And same thing boys done in the game. Great, sir. Great. That was very impressive. And we are looking forward how your team is definitely gonna dominate the remaining matches that we have to see. So let's see how it goes. But thank you so much, sir, Thank you for very giving much. your Have a time. good, have a, Thank thank you you. very much. Thank you. ठीक बोला ना भाई हैं
Hi everyone, this is MC Grancio again, and welcome back to Emerging Star Champions Trophy Season 1. This is Day 2, and we have the star player with us who just scored 153 runs in the very first inning. It's none other than Hitat, captain for Northern Knights. So first of all, bro, thank you so much for coming up. And kaisa laga? How do you think how it overall went? It went well. I think I batted really well, took the team with me, and Arnav also was supporting me with the singles and taking boundaries occasionally. So I think we put up a good score, and it's a competitive score. I think we can defend it. Our bowlers are really good, and if we put in the efforts, we will surely win this match. Definitely, we have been seeing that so far. You guys did like this is your second game. The first one, you guys dominated like anything. Arnav was already there, who scored like 100 plus. The kind of partnership you both have done, that was very impressive. So, what do you think? What is the strategy right now going forward with the game now? So we'll just try to bowl in our lines and lengths, not give too many extras, and attack the stumps, keep taking wickets so that the other team can not score runs and have the pressure. So basically, and field well, take our catches, good fielding, and if we do all of that, I think we will win the game. Definitely, we are looking forward to that. And the only question I think that makes me ask you is so far we have seen the game, so far we have seen everything happening. But what one thing you think is definitely helping you guys so far in like dominating the whole soul game? So I think it's our partnerships, our long partnerships. Last time also me and Arnav and Jairaj had a good partnership and we scored good. This time also me and Arnav and Abhyuday also played well. So this is our huge partnerships and our communication between each other on the pitch. We keep supporting each other. Right. If there's a maiden over, it's fine. We'll try to cope up in the next over. So it's basically our communication and our partnerships. Right, that's the best strategy that we have been seeing, and it's not just what happening on the field. You can definitely the whole stadium can feel it. All the audience can feel it. So we have been seeing that. And before I spoke to you, like before I'm speaking to you, I just spoke to your coach as well, and he did mention that you were aiming to hit 200 runs today. So what Yeah. happened to that plan? So I mean, I no, I just got out on a full toss. I was trying to hit it for six, hit it a little early, and I covered it. So I mean, it was a little. I was devastated, but it's fine. Yeah, we were able to see your impression that time. Like you were not prepared for it. You were hoping that it could be a no ball or something like that, and you can get that. But nevertheless, we have seen how you have been playing, especially for the last overs that you were playing, how dominated you went. You were like fully aggressive, just aiming for the fours, just aiming for the six. So that was, I think, definitely impressive. But overall, we are fully excited to see how the series go, how the second half of the innings go. So all the best. Thank you. Thank Siddharth, you so let's see much. how it goes. Thank Thank you. you. Thank you so much, everyone.
एक और अच्छी बॉल और बहुत ही शानदार 4 रन मिलते हुए यहां पर, और एक अच्छी बॉल और ये एक और अच्छी बॉल और यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन और बट एक रन चुराते हुए और श्योर कि सेकंड मैच में दे आर डूइंग मच बेटर. थोड़ा समय से यहाँ पे दूसरे फील्डर मौजूद, रन लेने की सोची बट कैंसिल किया. एंड दैट वाज एबल टू राइज अप नॉट द नाइट्स. स्वीप करने की कोशिश एंड डेफिनेटली ये होगा एक 4. इसके साथ नेक्स्ट बॉल है एंड उठा के मारा है, देखना पड़ेगा. एंड दैट्स अ 4 अगेन. एंड इसके साथ लास्ट बॉल ओवर की, काफी अच्छा हिट किया है. ओहो, एक और मिस फील्ड का यहाँ पे. तक तीसरी बॉल इस गेम की. आज में भी वो सेंचुरी के प्लान में होंगे, कर पाएंगे. सो इसके साथ सेकंड बॉल, एक और बॉल स्वीप किया है, ये देखना पड़ेगा 4 मिलते हैं कि नहीं. और शॉट भी था और ये उठा के मारा है. दैट वाज अ फुल टॉस. नाउ वी नीड टू सी एंड दैट्स अ सिक्स. विद दिस नेक्स्ट बॉल एंड कैच की अपील है. ओ, फील्डर के ऊपर से जाते हुए ये देखना पड़ेगा एक चौक. सो अर्णव की जो हर एक स्ट्राइक के बाद एनर्जी दिख रही है, वो दिख रहा है कि नाउ ही. तो काफी अच्छी लाइन एंड लेंथ का भी प्रयोग किया है टीम ने यहाँ पे. लास्ट बॉल ऑफ द ओवर एंड काफी अच्छा छठी बॉल इस ओवर की. तो देखते हैं, उठा के मारा है हितात ने एंड ये है एक और चौका. एक और बार उठा के मारा है अर्णव ने. मिस फील्ड थोड़ी सी यहाँ पे टका रखी है. थर्ड बॉल ऑफ दिस ओवर बाय अनुराग विद 56 रन्स. उठा के मारे हितात ने, कोई गलती नहीं इस बार, और ये डेफिनेटली चौका होना चाहिए. 3 और एक और बार नो बॉल का इशारा और पहले ही उठा दिया था उसे हवा में. 15 ओवर्स ऑफ दिस गेम. एक और बार काफी प्लान वे में और एक और मिस फील्ड गए. We have Hittart playing at 95, Arnav playing at 27. Talking about the strike with 28 runs. 140 is what Northern Knights are standing at currently. Thanks for Bharati. A good call by the Empire. But इस बार अर्णव ने कोई गलती नहीं की और चौका. And that's a very marvelous strike played by none other than Arnav. And that was impressive. Good attempt by the team, but again a misfield happening over here. And last ball of the over. And that's a wide. Jersey number 1-2. 19th over की पार्टनरशिप यहाँ पे, और यहाँ पे उठा के मारना है हितात ने. Trying to break the thing. Hitat on strike. Again, a very impressive batting by. Missed. And that's a mistake, but it landed. Again, now Arnav is not gonna stop, and that's a 4. And catch करने की यहाँ पे कोशिश की थी definitely bowler ने, and that's another one. 3. Pehli ball is over की, and let's see if it's gonna be a 4. And that's again an impressive hit. 41, another one at 49. So let's see. Another impressive hit by Hita.
And let's see if it's going for a 4. If it's going for a 4, and out of 216 run, this particular player has already contributed like anything. And that's a bold. Maybe they are repeating Harman, or Harman को पहले लेके आना चाहिए था उन लोगों को to break this partnership. Next, Sita's foundation. And that's an impressive hit by the player. Again, a massive hit by the player, and that's a 4. That's a came out of his over, and again a massive hit. Impressive hit, and ज़्यादा फायदेमंद रहेगा. So first ball of the over उठा के मारा है by, and that's a 6. Rotate the strike, keep the pressure on the baller side only, and that fifth ball of the over. Happened the last ball of this over. एक और अच्छी बॉल और बहुत ही शानदार 4 रन मिलते हुए यहां पर, और एक अच्छी बॉल, और ये एक और अच्छी बॉल, और यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन, और बट 1 रन चुराते हुए, और Sure कि सेकेंड मैच में दे आर डूइंग मच बेटर. थोड़ा समय से यहाँ पे दूसरे फील्डर मौजूद, रन लेने की सोची बट कैंसिल किया, एंड दैट वाज एबल टू राइज अप नॉर्थर्न नाइट्स. स्वीप करने की कोशिश, एंड डेफिनेटली ये होगा एक 4. इसके साथ नेक्स्ट बॉल है, एंड उठा के मारा है, देखना पड़ेगा, एंड दैट्स अ 4 अगेन. एंड इसके साथ लास्ट बॉल ओवर की, काफी अच्छा हिट किया है. ओहो, एक और मिस फील्ड का यहाँ पे. तक तीसरी बॉल इस गेम की. आज में भी वो सेंचुरी के प्लान में होंगे, कर पाएंगे. सो इसके साथ सेकंड बॉल, एक और बॉल स्वीप किया, ये देखना पड़ेगा 4 मिलते हैं कि नहीं. और शॉट भी था, और ये उठा के मारा है. दैट वाज अ फुल टॉस. नाउ वी नीड टू सी, एंड दैट्स अ 6. विद दिस नेक्स्ट बॉल, एंड कैच की अपील है. ओ, फील्डर के ऊपर से जाते हुए, ये देखना पड़ेगा एक चौक. सो अर्णव की जो हर एक स्ट्राइक के बाद एनर्जी दिख रही है, वो दिख रहा है कि नाउ ही, तो काफी अच्छी लाइन एंड लेंथ का भी प्रयोग किया है टीम ने यहाँ पे. लास्ट बॉल ऑफ द ओवर, एंड काफी छठी बॉल इस ओवर की. तो देखते हैं, उठा के मारा है हितात ने, एंड ये है एक और चौका. एक और बार उठा के मारा है अर्णव ने. मिस फील्ड थोड़ी सी यहाँ पे बता रखी है. थर्ड बॉल ऑफ दिस ओवर बाय अनुराग विद 56 रन्स. उठा के मारे हितात ने, कोई गलती नहीं इस बार, और ये डेफिनेटली चौका होना चाहिए. 3 और एक और बार नो बॉल का इशारा, और पहले ही उठा दिया था उसे हवा में. 15 ओवर्स ऑफ दिस गेम. एक और बार काफी प्लान वे में, और एक और मिस फील्ड गया. We have Hitat playing at 95, Arnav playing at 27. Talking about strike with 28 runs. 140 is what Northern Knights are standing at currently. Thanks for Bharati. A good call by the umpire. But इस बार अर्णव ने कोई गलती नहीं की, और चौका. And that's a very marvelous strike played by none other than Arnav.
And that was impressive. Good attempt by the team, but again a misfield happening over here. And last ball of the over. And that's a wide. Jersey number 1-2. 19th ओवर की पार्टनरशिप यहाँ पे और यहाँ पे उठा के मारना है हितात ने trying to break the thing. Hitat on strike. Again a very impressive batting by missed. And that's a mistake, but it landed. Again, now Arnav is not gonna stop, and that's a 4. And catch करने की यहाँ पे कोशिश की थी definitely bowler ने, and that's another one. 3. पहली ball is over की, and let's see if it's gonna be a 4. And that's again an impressive hit. 41, another one at 49. So let's see. Another impressive hit by Hita. And let's see if it's going for a 4. If it's going for a 4, and out of 216 runs, this particular player has already contributed like anything. And that's a ball. Maybe they are repeating Harman, or Harman को पहले लेके आना चाहिए था उन लोगों to break this partnership. Sita's foundation. And that's an impressive hit by the player. Again, a massive hit by the player, and that's a 4. That's a came out of his over, and again a massive hit. Impressive hit, and ज़्यादा फायदेमंद रहेगा. So first ball of the over उठा के मारा है by, and that's the 6. Rotate the strike, keep the pressure on the bowler side only. And that fifth ball of the over. Happened the last ball of this over. एक और अच्छी बॉल और बहुत ही शानदार 4 रन मिलते हुए यहां पर, और एक अच्छी बॉल, और ये एक और अच्छी बॉल, और यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन, और बट एक रन चुराते हुए, और Sure कि सेकेंड मैच में दे आर डूइंग मच बेटर. थोड़ा समय से यहाँ पे दूसरे फील्डर मौजूद, रन लेने की सोची बट कैंसिल किया. एंड दैट वाज एबल टू राइज अप नॉर्थर्न नाइट्स. स्वीप करने की कोशिश, एंड डेफिनेटली ये होगा एक 4. इसके साथ नेक्स्ट बॉल है, एंड उठा के मारा है, देखना पड़ेगा. एंड दैट्स अ 4 अगेन. एंड इसके साथ लास्ट बॉल ओवर की, काफी अच्छा हिट किया है. ओहो, एक और मिस फील्ड का यहाँ पे. तक तीसरी बॉल इस गेम की. आज में भी वो सेंचुरी के प्लान में होंगे, कर पाएंगे. सो इसके साथ सेकंड बॉल, एक और बॉल स्वीप किया है, ये देखना पड़ेगा 4 मिलते हैं कि नहीं. और शॉट भी था, और ये उठा के मारा है. दैट वाज अ फुल टॉस. नाउ वी नीड टू सी, एंड दैट्स अ सिक्स. विद दिस नेक्स्ट बॉल, एंड कैच की अपील है. ओ, फील्डर के ऊपर से जाते हुए, ये देखना पड़ेगा एक चौक. सो अर्नव की जो हर एक स्ट्राइक के बाद एनर्जी दिख रही है, वो दिख रहा है कि नाउ ही. तो काफी अच्छी लाइन एंड लेंथ का भी प्रयोग किया है टीम ने यहाँ पे. लास्ट बॉल ऑफ द ओवर, एंड काफी छठी बॉल इस ओवर की. तो देखते हैं, उठा के मारा है हितात ने, एंड ये है एक और चौका. एक और बार उठा के मारा है अर्नव ने. मिस फील्ड थोड़ी सी यहाँ पे बता रखी है. थर्ड बॉल ऑफ दिस ओवर by Anurag with 56 runs.
उठा के मारे हितात ने, कोई गलती नहीं इस बार, और ये डेफिनेटली चौका होना चाहिए। 3 और एक और बार नो बॉल का इशारा, और पहले ही उठा दिया था उसे हवा में। 15 ओवर्स ऑफ दिस गेम। एक और बार काफी प्लान वे में, और एक और मिस फील्ड गए। We have Hitat playing at 95, Arnav playing at 27. Talking about the strike with 28 runs. 140 is what Northern Knights are standing at currently. Thanks for Bharati. A good call by the umpire. But इस बार अर्नव ने कोई गलती नहीं की और चौका. And that's a very marvelous strike played by none other than Arnav. And that was impressive. Good attempt by the team, but again a misfield happening over here, and last ball of the over. And that's a wide. Jersey number 1-2. 19th ओवर की पार्टनरशिप यहां पे, और यहां पे उठा के मारना है हितात ने, trying to break the thing. Hitat on strike. Again, a very impressive batting by missed. And that's a mistake, but it landed. So, again, now Arnav is not gonna stop, and that's a 4. And कैच करने की यहाँ पे कोशिश की थी डेफिनेटली बॉलर ने, एंड दैट्स अनदर वन. 3. पहली बॉल इज ओवर की, एंड लेट्स सी इफ इट्स गोना बी अ 4, एंड that's again an impressive hit. 41, another one at 49. So let's see. Another impressive hit by Hita. And let's see if it's going for a 4. If it's going for a 4, and out of 216 runs, this particular player has already contributed like anything. And that's the ball. Maybe they are repeating Harman, or Harman को पहले लेके आना चाहिए था उन लोगों को to break this partnership. CDAS Foundation. And that's an impressive hit by the player. Again, a massive hit by the player, and that's a 4. That's a came out of his over, and again a massive hit. Impressive hit, and ज़्यादा फायदेमंद रहेगा. So first ball of the over उठा के मारा है by, and that's a 6. Rotate the strike, keep the pressure on the baller side only. And that fifth ball of the over. Happened the last ball of this over. एक और अच्छी बॉल, और बहुत ही शानदार 4 रन मिलते हुए यहां पर, और एक अच्छी बॉल, और ये एक और अच्छी बॉल, और यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन, और बट 1 रन चुराते हुए, और Sure, कि सेकेंड मैच में दे आर डूइंग मच बेटर. थोड़ा समय से यहाँ पे दूसरे फील्डर मौजूद, रन लेने की सोची बट कैंसिल किया, एंड दैट वाज एबल टू राइज अप नॉर्थर्न नाइट्स. स्वीप करने की कोशिश, एंड डेफिनेटली ये होगा एक 4. इसके साथ नेक्स्ट बॉल है, एंड उठा के मारा है, देखना पड़ेगा
and that's a 4 again. एंड इसी के साथ लास्ट बॉल ओवर की काफी अच्छा हिट किया है. ओहो, एक और मिस फील्ड का यहाँ पे तक तीसरी बॉल इस गेम की. आज में भी वो सेंचुरी के प्लान में होंगे, कर पाएंगे. सो इसी के साथ सेकंड बॉल, एक और बॉल स्वीप किया है, ये देखना पड़ेगा 4 मिलते हैं कि नहीं. और शॉट भी था और ये उठा के मारा है. दैट वाज अ फुल टॉस. नाउ वी नीड टू सी एंड दैट्स अ सिक्स. विद दिस नेक्स्ट बॉल एंड कैच की अपील है. ओ, फील्डर के ऊपर से जाते हुए ये देखना पड़ेगा एक चौक. सो अब अर्नव की जो हर एक स्ट्राइक के बाद एनर्जी दिख रही है, वो दिख रहा है कि नाउ ही. तो काफी अच्छी लाइन एंड लेंथ का भी प्रयोग किया है टीम ने यहाँ पे. लास्ट बॉल ऑफ द ओवर एंड काफी अच्छा छठी बॉल इस ओवर की. तो देखते हैं, उठा के मारा है हितात ने एंड ये है एक और चौका. एक और बार उठा के मारा है अर्नव ने. मिस फील्ड थोड़ी सी यहाँ पे पका रखी है. थर्ड बॉल ऑफ दिस ओवर बाय अनुराग विद 56 रन्स. उठा के मारे हितात ने, कोई गलती नहीं इस बार, और ये डेफिनेटली चौका होना चाहिए. 3 और एक और बार नो बॉल का इशारा और पहले ही उठा दिया था उसे हवा में. 15 ओवर्स ऑफ दिस गेम. एक और बार काफी प्लान वे में और एक और मिस फील्ड गए. We have Hitat playing at 95, Arnav playing at 27. Talking about strike with 28 runs. 140 is what Northern Knights are standing at currently. Thanks for Bharati. A good call by the Empire. But इस बार अर्नव ने कोई गलती नहीं की और चौका. And that's a very marvelous strike played by none other than Arnav. And that was impressive. Good attempt by the team, but again a misfield happening over here. And last ball of the over. And that's a wide. Jersey number 1-2. 19th over की पार्टनरशिप यहाँ पे, और यहाँ पे उठा के मारना है हितात ने. Trying to break the thing. Hitat on strike. Again, a very impressive batting by missed. And that's a mistake, but it landed. So, again, now Arnav is not gonna stop, and that's a 4. And catch करने की यहाँ पे कोशिश की थी definitely bowler ने, and that's another one. 3. Pehli ball is over की, and let's see if it's gonna be a 4. And that's again an impressive hit. 41, another one at 49. So let's see. Another impressive hit by Hita. And let's see if it's going for a 4. If it's going for a 4, and out of 216 runs, this particular player has already contributed like anything. And that's the ball. Maybe they are repeating Harman, or Harman को पहले लेके आना चाहिए था उन लोगों to break this partnership. CETA's foundation. And that's an impressive hit by the player. Again, a massive hit by the player, and that's a 4. That's a came out of his over, and again a massive hit. Impressive hit, and ज़्यादा फायदेमंद रहेगा. So first ball of the over उठा के मारा है by, and that's a 6. Rotate the strike, keep the pressure on the baller side only. And that fifth ball of the over.
Happened the last ball of this over. एक और अच्छी बॉल और बहुत ही शानदार 4 रन मिलते हुए यहां पर, और एक अच्छी बॉल और ये एक और अच्छी बॉल और यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन और बट 1 रन चुराते हुए और Sure कि सेकेंड मैच में दे आर डूइंग मच बेटर. थोड़ा समय से यहाँ पे दूसरे फील्डर मौजूद, रन लेने की सोची बट कैंसिल किया. एंड दैट वाज एबल टू राइज अप नॉट द नाइट्स. स्वीप करने की कोशिश एंड डेफिनेटली ये होगा एक 4. इसके साथ नेक्स्ट बॉल एंड उठा के मारा है, देखना पड़ेगा. एंड दैट्स अ 4 अगेन. एंड इसके साथ लास्ट बॉल ओवर की. काफी अच्छा हिट किया है. ओहो, एक और मिस फील्ड का यहाँ पे. तक तीसरी बॉल इस गेम की. आज में भी वो सेंचुरी के प्लान में होंगे, पाएंगे. सो इसके साथ सेकंड बॉल एक और बॉल स्वीप किया. ये देखना पड़ेगा 4 मिलते हैं कि नहीं. और शॉट भी था और ये उठा के मारा है. दैट वाज अ फुल टॉस. नाउ वी नीड टू सी एंड दैट्स अ सिक्स. विद दिस नेक्स्ट बॉल एंड कैच की अपील है. ओ, फील्डर के ऊपर से जाते हुए ये देखना पड़ेगा एक चौक. सो अर्णव की जो हर एक स्ट्राइक के बाद एनर्जी दिख रही है, वो दिख रहा है कि नाउ ही. तो काफी अच्छी लाइन एंड लेंथ का भी प्रयोग किया है टीम ने यहाँ पे. लास्ट बॉल ऑफ द ओवर एंड काफी छठी बॉल इस ओवर की. तो देखते हैं. उठा के मारा है हितात ने एंड ये है एक और चौका. एक और बार उठा के मारा है अर्णव ने. मिस फील्ड थोड़ी सी यहाँ पे बता रखी है. थर्ड बॉल ऑफ दिस ओवर बाय अनुराग विद 56 रन्स. उठा के मारे हितात ने. कोई गलती नहीं इस बार और ये डेफिनेटली चौका होना चाहिए. 3 और एक और बार नो बॉल का इशारा और पहले ही उठा दिया था उसे हवा में. 15 ओवर्स ऑफ दिस गेम. एक और बार काफी प्लान वे में और एक और मिस फील्ड गए. We have Hitat playing at 95, Arnav playing at 27. Talking about strike with 28 runs. 140 is what Northern Knights are standing at currently. Thanks for Bharati. A good call by the umpire. But इस बार अर्णव ने कोई गलती नहीं की और चौका. And that's a very marvelous strike played by none other than Arnav. And that was impressive. Good attempt by the team, but again a misfield happening over here. And last ball of the over. And that's a wide. Jersey number 1-2. 19th over की पार्टनरशिप यहाँ पे. और यहाँ पे उठा के मारना है हितात ने. Trying to break the thing. Hitat on strike. Again, a very impressive batting by missed. And that's a mistake, but it landed. Again, now Arnav is not gonna stop, and that's a 4. And catch करने की यहाँ पे कोशिश की थी definitely bowler ने, and that's another one. 3.
Belly ball is so worky. And let's see if it's gonna be a four. And that's again an impressive hit. 41, another one at 49. So let's see. Another impressive hit by Hita. And let's see if it's going for a four. If it's going for a four, and out of 216 run, this particular player has already contributed like anything. And that's a bold. Maybe they are repeating Harman or Harman को पहले लेके आना चाहिए था उन लोगों को to break this partnership. Next, Sita's foundation. And that's an impressive hit by the player. Again, a massive hit by the player, and that's a four. That's a came out of his over, and again a massive hit. Impressive hit, and ज़्यादा फायदेमंद रहेगा. So first ball of the over उठा के मारा है by, and that's the six. Rotate the strike, keep the pressure on the baller side only, and that fifth ball of the over. Happened the last ball of this over. एक और अच्छी बॉल और बहुत ही शानदार 4 रन मिलते हुए यहां पर और एक अच्छी बॉल और ये एक और अच्छी बॉल और यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन और बट 1 रन चुराते हुए और Sure कि सेकंड मैच में दे आर डूइंग मच बेटर. थोड़ा समय से यहाँ पे दूसरे फील्डर मौजूद रन लेने की सोची बट कैंसिल किया एंड दैट वाज एबल टू राइज अप नॉट द नाइट्स. स्वीप करने की कोशिश एंड डेफिनेटली ये होगा एक चार. इसके साथ नेक्स्ट बॉल है एंड उठा के मारा है देखना पड़ेगा एंड दैट्स अ फोर अगेन. एंड इसके साथ लास्ट बॉल ओवर की काफी अच्छा हिट किया है. ओहो एक और मिस फील्ड का यहाँ पे तक तीसरी बॉल इस गेम की. आज में भी वो सेंचुरी के प्लान में होंगे कर पाएंगे. सो इसी के साथ सेकंड बॉल एक और बॉल स्वीप किया है. ये देखना पड़ेगा चार मिलते हैं कि नहीं. और शॉट भी था और ये उठा के मारा है. दैट वाज अ फुल टॉस. नाउ वी नीड टू सी एंड दैट्स अ सिक्स. विद दिस नेक्स्ट बॉल एंड कैच की अपील है. ओ फील्डर के ऊपर से जाते हुए ये देखना पड़ेगा एक चौक. सो अब अर्नव की जो हर एक स्ट्राइक के बाद एनर्जी दिख रही है वो दिख रहा है कि नाउ ही तो काफी अच्छी लाइन एंड लेंथ का भी
Hi everyone, this is MC Branshu and we are back with the second inning for the second match happening between Rising Titans and Northern Knights. And if we are talking about the current over, definitely it's a very amazing start that we are seeing happening for the Rising Titans. We should not be definitely underestimating this particular team because पहली दो बॉल में आ चुके हैं 8 रन. They have a big target to chase of 259 runs and 180 balls, and from the very first ball they have been very aggressive with that. So yeah, let's see how it goes. So far the players on the field that we have is Viraj and Vivan, and with this we have a white wall. नॉर्थन नाइट्स के लिए हो सकता है आज ये गेम थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है looking at the kind of start that we are seeing happening for Rising Titans. The bowler we have is R. Nandan, jersey number 4. So let's see how it goes. Third ball. Great strike, but straight to the captain. Dot ball, koi run nahi. And definitely Viraj and Vivan have to make sure कि initial, especially for the power play and then for the initial overs, they are not letting even a single wicket go, because that way the kind of pressure that is happening वो पूरा का पूरा convert हो जाएगा. So definitely they need to make sure that everything is very streamlined. Again, a great strategy, not trying to hit and convert every ball into a 4 or a 6, not trying to play the risk game over here. So very smartly opening done by Virat so far. 4 balls he has played with 8 runs coming from 2 boundaries. Anandan. 5th ball of the over. A great strike. A bit of a miscommunication happening between both the batsmen. कि run लेना है कि नहीं. Vivan was not prepared for that, whereas Viraj already भागना चालू कर चुके थे. So now we finally have Vivan on the strike now. He's gonna play the first ball, and that will be the last ball of the over. Still a great target to chase. The current run rate is 12, required run rate is 8.71. So definitely a great start to Rising Titans. Definitely we want to see, like last time, Northern Knights have taken away victory away from Victory Panthers. Are they gonna stop the Rising Titans today or not with their bowling spells? A very great line and length, I can say over here. And with this, we have 1 over done. 10 रन आते हुए इस ओवर से बिना किसी नुकसान के. 29 overs more to go, and the target is 264 runs, everyone. Both the batsmen must be talking about how they definitely want to make sure none of them are losing the wickets, how they definitely want to make sure that the pressure of this complete run rate, the pressure of this complete game is happening on Northern Knights only. Because the moment it will be converting to Rising Titans, it will be a game changer. So yeah, that's the strategy they will be having for sure. And with this, we have the second bowler on field, that is Tanmay Singh. Jersey number 24, Tanmay. Ready to ball his first ball. On strike, we have Viraj. A great strike by him, but again, straight to the fielder. So the still we need like 254 runs required for 173 balls. So a long target, a long chase to be done over here.
Viraj on strike, second ball. A good try, but it was a miss and definitely a wide. So again, Northern Knights need to make sure the extras, the wides, the no balls, any such runs should not be coming from their side. Because definitely we have seen they did dominated by their batting. Even in the last game, they dominated with their batting, with their bowling, with their fielding and everything. But yeah, Shiruat is not that strong what we expected for Northern Knights. With this, we have the second ball of this over. And उठा के मारा है विराज ने. We have to see whether it's a 6 or a 4. And that's definitely a 6, everyone. Impressive shot by Viraj Kumar. With 7 balls, he had reached the score of 15. And talking about the Rising Titans, with 17 runs, 15 are just contributed by Viraj. So very impressive gameplay over here. Just planned the shot in the right way, just waited for the ball to come, connected it with the bat, and showed it direction outside the boundary. Third ball of the over, converting into a single. काफी अच्छी समझदारी यहाँ पे by both the batsmen, not trying to keep on dominating every ball into a boundary or a 6, trying to keep that strike, trying to rotate that strike to ensure that the bowler can also keep feeling that pressure. So with this, we have 3 more balls to go in this particular over. अभी तक इस over में 8 run already आ चुके हैं. 1 6, 1 wide and 1 run. Fourth ball of the over. A good line and length, a very great line and length over here. And talking about the current run rate, it's already reached to 10. The required run rate is 8. So till the time Rising Titans are able to keep it above the run rate of like 8 or 9, I think they should be in good shape. But yeah, having said that, they definitely need to make sure कि कोई भी wicket उनकी तरफ से नहीं गिर रहा है. They are like standing like a wall, ensuring maybe just getting a singles or doubles, but not letting the wicket go. And a very impressive again line and length shown here by Tanbay, jersey number 24. अब तक 3 डॉट बॉल आ चुके हैं इस पर्टिकुलर ओवर से, whereas talking about the runs, 8 रन आ चुके हैं. So with this, we have the last ball of the over. Vivan, jersey number 1, has still not opened his scoreboard. So let's see if we will be seeing a run coming from the last ball. Again, a very impressive line and length shown by Tanmay, very impressive line and length. With this 2 overs down, Rising Titans sitting at 18 runs without any wicket. The required run rate has dropped to 9, and the required run rate is 8.79, and the current run rate is 9. So again, they are doing good in terms of the run rate. They just need to ensure कि हर ओवर में 8 runs, 9 runs आ रहे हैं, so that जो pressure एक build होगा end में, that should be coming on the Northern Knights and not on Rising Star. With this, the next bowler we have is R. Nandan. First over, he has delivered 0 wickets, 10 runs. So let's see how it goes in this particular over. Pehli ball इसी के साथ, it was a full toss straight to the fielder, but misfield by them and converting it into a 4 by Viraj K. 16 रन अभी तक आते हैं उनके बल्ले से. A very misfield done by the team player over here. They definitely need to make sure Northern Knights की कोई भी misfield ऐसे type के नहीं हो रहे, because definitely at the end of the day, those misfield will eventually take them down. So let's see how quickly they are able to get a wicket first of all, and how strongly they can ensure that they are able to make sure कोई extras नहीं आ रहे हैं and कोई wides वगैरह नहीं आ रहे हैं. There's a ball change request done by the umpire so far, so we are waiting for that. But in the meanwhile, the people who are watching me on screen, I'm pretty much sure they are able to see the field. They are able to get a bit of an understanding कितनी गर्मी बढ़ चुके हैं यहाँ पे. It's all getting hot. We are ready to welcome the summer over here. But yeah, it's getting super hot.
जैसे जैसे थोड़ा टाइम और बढ़ता जाएगा, the temperature will be increasing again. So yeah, the team need to make sure before they start getting tired, before the energy start getting out of their body, they have converted that into numbers. So we are ready. We are back in form. This is the second ball of the over. Again, full toss और उठा के मारा है, and again an impressive four by Viraj K. Everyone. दो बॉल हुई हैं इस ओवर में और 8 रन ऑलरेडी आ चुके हैं. लास्ट ओवर में 10 रन आए थे. इस ओवर में अभी तक 8 रन आ चुके हैं एंड विराज हैज ऑलरेडी रीच्ड अ स्कोर ऑफ 24 runs. Whereas the Rising Titans are sitting at 26, dismissed the two extras, and everything else has came just from Viraj's bat with just 10 balls. But this, we are having the third ball of the over. Again, impressive shot, not trying to push it way harder, trying to keep it under control. Dot ball. And the way the Viraj is batting, definitely we can see he is here not to take that pressure. He is here to give that pressure back to the team, to the Northern Knights. Fourth ball of the over. Again, an impressive shot, and that should be a four, everyone. Coming directly from Viraj. 28 runs in just 12 balls, and with this, Rising Titans have reached a scoreboard of 26 runs. So sorry, a scoreboard of 30 runs with no wickets down. Again, the team is definitely from the very first over, the kind of start Northern Knights actually they are doing much better over here compared to that. They're not at all taking up that pressure. They are here to deliver that pressure from wall one. Very impressive line length over here. There was call for a run from Viraj, but Vian said no because that was a smart decision. अभी कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है. You already have got like 12 runs out of this over. Required run rate is just 8. You're already at 12. So yeah, कोई गलती यहाँ पे, कोई misfield. Let's wait for any of the mistakes to be happen from other team. But yeah, the batting side should not be making any mistake over here. With this, we have the last ball of the over. Again, impressive one, just show the direction, and again a misfield by the player. Getting it, another four by Viraj. और इस ओवर में आ चुके हैं पूरे के पूरे 16 रन 4 बाउंड्रीज के साथ. All coming from Viraj's bat. And with this, the scorecard has reached to 34 runs, 3 overs down, no wicket loss. Viraj batting at 32 runs, 14 balls, and Vivan with 0 runs, 4 balls. Let's see who's going to be the next bowler on the field. Assuming it to be Tanway, jersey number 24, ready to deliver his first ball from the second over. And talking about the first over, he did good. He was not able to get any wicket and just delivered like 8 runs. But yeah, Northern Knights definitely need to make sure in the first 6 overs they are able to get at least 1 wicket. So here you go, the very first ball of this over. Very impressive bowling, very great line and length. We can feel a bit of a pressure happening on Tanway, a bit of a pressure happening on Vivan. So let's see. They have increased the run rate to 10, and whereas like we have been talking about, the required run rate is still standing at 8.57. But this second ball of the over, great line and length, great line and length. Again, just trying to hold the fort,
not trying to be very impressive over here. And that's kind of a great start, I can say. That's the partnership we all have been seeing happening, where you let one of the batsmen take the charge, let him hit all the fours, let him hit all the numbers, all the big numbers. Whereas on the second hand, you are just standing, you are making sure that, okay, you are just supporting him, not letting the wicket go. Maybe you are not scoring that big, but yeah, that's the support sometimes that is required कि दूसरे छोर से wicket नहीं गिर रहा है till the time another player is like hitting big. So yeah, with this third ball of the over, and that's an impressive hit. That was almost very close to the fielder's hand, but it was missed, and that converted into a four. Let's see that in slow motion. थोड़ा सा अगर उछल के they would have tried to catch it. It might could have converted, but yeah,
कि बैट्समैन कोई यहाँ पे गलती करे. With this, we have the last ball of the fifth over by Anshul, faced by Virat, sitting at 33 runs. Again, एक काफी impressive, but it should be going straight to the fielder. एक run आएंगे सिर्फ. And with this 5 over बाद, the runs are 49 runs, बिना किसी नुकसान के. The target they still are chasing थोड़ा सा दूर है अभी, but the way Rising Titans have started, that's very impressive. 49 runs have come so far in last 5 overs. So the required run rate is still at 8.6. The current run rate is 9.80. And now we have Anshul as the next bowler coming in. एक spell अभी तक उन्होंने डाला है and he has just given 7 runs. So let's see how impressive he will be in this particular over. First ball will be faced by Vivan. आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, but converted into a dot, but very impressive line and length shown by Anshul over here. And talking about the competition, definitely we had one great start today, scoring 153 runs in just 83 delivers. That was the captain for Northern Knight. And now we have another shining star, Viraj. So let's see how impressive he will be today. Again, a very impressive fielding over here. We can definitely see the coach is like kind of guiding him, guiding the teams, keeping them motivated, of not letting go of even a single ball. And I think that kind of energy, the pressure Northern Knights have started facing. Because they also have to understand it's not going to be easy like the first game they might had. This is going to be definitely a difficult one. With this, the third ball of the over, 2 dots ball so far, and that's an impressive hit. Let's see if they are going to catch it or not. But a very, very misjudgment by the two players. दो fielders साथ में भागे but were not able to catch it, and that could have been a very, very big and impressive wicket. The breakthrough they might have been looking forward for. Because the kind of form Viraj is in right now, that's very impressive. So with this, 3 बॉल रहते हुए इस ओवर की 50 रन फाइनली ओवर हो चुके हैं राइजिंग टाइटंस के. They are still needing 214 runs. Again, an impressive one, but fielder is there. Fielder should be able to stop. And just 1 run coming out of this particular ball. अभी तक 4 ओवर में आ चुके हैं, गिनती के 2 रन with 2 dot balls and 2 singles. And a very big catch that was missed by the team. Because definitely missing catches could lead you to lose the match also. With this 5th ball of the over, impressive batting over here. And definitely very impressive line and length maintained by Tanmay as well. कोई गलती नहीं यहाँ पे, इनका ये 3rd over है. So far he has just contributed 19 runs. So yeah, very impressive and very calculative. So with this, the last ball of the 6th over. Last ball of this over. 3 run अभी तक आए हैं. And again, try to hit it hard. But bat का नीचे का हिस्सा लगा. थोड़ी सी misfielding, but definitely 1 run आते हुए यहाँ पे भी. So impressive over so far by Tanvay. He just gave like 4 runs out of this over. But talking about the scoreboard now, Rising Titans sitting at 53 runs without any loss. 6 overs के बाद, Viraj sitting at 36 runs with 20 balls, and Vivan sitting at 15 runs. The required run rate is 8.79. The current run rate is 8.83. And the team need 211 runs from next 24 overs. So the kind of तन्मय बॉलिंग के कारण जो थोड़ा सा एक लगाम लगाया है इन्होंने थोड़े स्कोर्स में, that's impressive, and that's the kind of
गेम प्ले आई थिंक दे नीड टू कंटिन्यू थोड़ा सा एक फर्स्ट ऑफ ऑल विकेट इज डेफिनेटली द फर्स्ट प्रायोरिटी बट अगेन थोड़ा रन्स को बचाने पड़ेंगे बाउंड्रीज पे फोकस करना पड़ेगा कि कोई बाउंड्री नहीं जा रही है हाउ मच दे कैन मोर टाइटन अप द फील्डिंग एंड अगेन वेरी इंप्रेसिव बॉलिंग बाय अंशुल दैट्स सेकेंड ओवर पहले ओवर में उनके से 7 रन आए थे जर्सी नंबर 11 अंशुल Vivan on strike. Second ball of the over. And उठा के मारा है. This we need to see. Is it a 6 or is it a catch out? That's the breakthrough the team has been looking forward for. Northern Knights everyone. पहला wicket finally गिरता हुआ for Rising Titans. And that's the gameplay, that's the strategy. इतनी देर से the team was looking forward to. एक catch, एक गलती by the player, and that is what we all have been waiting for. Straight to the fielder, कोई गलती नहीं वहां. But definitely Northern Knights should not be celebrating way too early क्योंकि अभी even if we are looking at the current run rate and the performance, काफी ज्यादा टक्कर की मुकाबला है अभी भी. They need to make sure they are back in field, they are back in full energy and full power. But impressive batting so far. The next player that we have on the field is Harman. So 211 runs still required. Jersey number 5, Harman on the strike now. Anshul, very impressive bowling so far by him. 7 रन अभी तक दिए हैं, 1 विकेट ली हैं, and he has just delivered 8 balls. So again, very impressive bowling done by the team members. So we are ready for the third ball of this over. अभी तक इस ओवर में आए हैं 1 डॉट बॉल and 1 विकेट. And that was a very required wicket. टॉप ऑर्डर जितनी जल्दी खाली होगा उतना ज़्यादा नॉर्थन नाइट्स के लिए बेटर रहेगा. थर्ड बॉल ऑफ द ओवर, वेरी इंप्रेसिव लाइन एंड लेंथ, बट थोड़ी सी बाहर रही. That converted into a wide, giving an extra run to Rising Knights, taking their score to 54 with 1 wicket down. Going to the third ball of the over. Again, very impressive line and length, very impressive. Anshul trying to keep it with the right line and length कि कोई गलती बैटमैन की तरफ से ही होनी चाहिए, not from his side. So let's go for the fourth ball. Again, a very impressive line and length, very impressive line and length. कोई गलती नहीं है अंशुल द्वारा. And definitely नए batsman आया Herman on field, so he might take some time, he might take a couple of deliveries to get habitual to it. And good strike, but again straight to the fielder, कोई रन नहीं. काफी अच्छा ओवर साबित होता हुआ ये नॉर्थन नाइट्स के लिए. एक रन रेट का जो दिक्कत चल रही थी उसको उन्होंने काफी कन्वर्ट कर दिया है. Last ball of the over, guys. Let's see, just 1 run coming out of it. But again, the fielder is very strong. We have to see. पहुंच चुका था बैट्समैन. But yeah, काफी impressive यहाँ पे अंशुल द्वारा. Just 1 run and 1 wicket coming out of this over. 2 over बाद Anshul has delivered 1 wicket and 9 runs. Rising Titans sitting at 55 runs, 1 wicket को नुकसान के साथ after 7 overs. Required run rate is 9.09 and the current run rate is 7.86. The target, let's not forget about it, it's 264 that the team is chasing. They still need 209 runs out of next 138 balls. And talking about our batsman, we have Viraj sitting at 36 runs. Then we have Herman, the new batsman, sitting at 1 run.
Anshul back again. I'm sorry. That's another bowler. Yep. So that's तन्मय 3 ओवर अभी तक डाल चुके हैं 20 रन अभी तक दिए हैं कोई विकेट कोई सफलता नहीं मिली उन्हें but we have seen his performance in last match as well so we are pretty much sure it should be something fun coming in for sure. पहली बॉल इस ओवर की काफी इंप्रेसिव बॉलिंग थी बट उससे ज्यादा इंप्रेसिव बैटिंग यहाँ पे स्ट्रेट ड्राइव कर दिया बाउंड्री के पार 4 runs कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम हरमन्स बैट. And even if we are looking at slow motion, काफी impressive था. He just showed the ball that direction to the boundary. कोई गलती नहीं वहां by the batsman. So again, maybe Rising Titans को एक हल्का सा झटका मिला था बीच में, but it seems like they are getting back on track. The pressure that they had for a while, they are converting it, they are giving it back to Northern Knights. Second ball of the over again घुमा के मारा है, and that's another 4. Everyone, that's what we have been talking about. Pressure बिल्कुल भी अभी this is a kind of a match that has been I think we all will be excited to see how it's gonna go, how it's gonna end because अभी काफी कांटे की टक्कर हो चुकी है. No one can say which of the team is gonna win because both the teams have come out very strong, especially in terms of the batting lineup. तन्मय अभी just new batsman आया 6 बॉलें सिर्फ उन्होंने खेली and he has already hit 2 boundaries within this over. Third ball of the over, again in the same kind of direction, but good fielding over there, just able to get 1 run out of this. 9 रन अभी तक आते हुए इस ओवर से. एंड लास्ट ओवर में जो रिक्वायर्ड रन रेट और करंट रन रेट में बहुत बड़ा डिफरेंस आया था दे आर एबल टू कवर दैट अगेन. सो आई थिंक टिल द टाइम एक आधे ओवर अगर कुछ मिस भी हो रहा है दे आर एबल टू कवर इट विद द नेक्स्ट ओवर. आई थिंक दैट्स गुड. बट या नॉर्थर्न नाइट्स डेफिनेटली नीड अनदर विकेट राइट नाउ. अगेन गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स 1 रन चराते हुए वहां पे. तन्मय इज बैक ऑन ट्रैक. सो अभी तक इस ओवर से आए हैं गिनती के 10 रन. हरमन इज ऑन स्ट्राइक. Fifth ball of the over. Great line and length. Straight to the fielder. Dot ball. कोई गलती नहीं यहाँ पे. But overall, तन्मय has been doing good. ये उनका चौथा ओवर है. 30 रन अभी तक आए हैं. कोई सफलता नहीं मिली है. तो definitely he need to make sure last ball कुछ तो impressive आए. And that's the impressive call. That's the impressive call, but not out. And with this, after 8 overs, the score is 65 runs. 1 विकेट के नुकसान पे. Again, we saw the slow motion clip of the LBW appeal, but it was rejected by the umpire. Next bowler, is it going to be Tanmay again? Jersey number 11. So sorry, Anshul, jersey number 11. He has been doing amazing, especially in the last series as well, like the last match, and definitely today those over अभी तक डाले हैं सिर्फ 9 रन दिए हैं 1 विकेट लिया है. So definitely very impressive bowling so far. So let's see if he's able to break the new partnership that is building up between Viraj and Harman. And Viraj should be definitely targeting कि now थोड़ा सा जो एक बिल्कुल बीच में break आया था by losing a wicket, they are able to overcome that and take it forward from there. First ball of the over. Okay, need to see fielder से यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए. थोड़ा सा slow थे.
but able to get it. सिर्फ एक रन आते हुए अभी तक इस ओवर से एक बॉल पे. अगेन रन रेट का थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हुए करंट रन रेट आ चुका है 8 पे. रिक्वायर्ड रन रेट जा चुका है 9 पे. So as soon as they are able, like Northern Knights is able to make sure कि runs ना जाए, singles ना जाए, चौके छक्के ना जाए, they are able to control that run scoreboard. Batsman से गलती होगी. So that is something they should be aiming for. Again पीछे फील्डर मौजूद, but एक रन लेते हुए बिना कोई गलती के. अभी तक इस ओवर में 2 बॉल, सिर्फ 2 रन, 2 सिंगल्स. थर्ड बॉल ऑफ द ओवर. दैट शुड बी अ कैच. ओहो, दैट वाज अ मिस. थोड़ा फील्डर को आगे आना चाहिए था. ट्राई टू अटेम्प्ट इट. दैट कुड हैव बीन अ बिग वन, बट कन्वर्ट हुई है डॉट बॉल में, विच इज स्टिल गुड. क्योंकि जितनी डॉट्स बॉल आएंगी उतना ज़्यादा प्रेशर बैट्समैन के ऊपर बिल्ड होता है. फोर्थ बॉल ऑफ द ओवर. अगेन वेरी इंप्रेसिव बाय अंशुल, converting it into a dot ball. In the next 2 balls, we definitely want to see Viraj will be aiming to just take some singles or trying to hit. And आगे बढ़ के आके खेलना तो चाह रहे थे, but looking at the ball speed and everything, he decided कि knock करके let me just take a single. And सही strategy, कोई अभी risk लेने की जरूरत नहीं है. They just need to make sure they have the wickets on hand. They are able to rotate the strike, get it to a decent scoreboard, keeping the run rate matched to the required one, and they should be good to go. Last ball of the over by Anshul. On strike Herman. And again, just trying to rotate the strike. यहाँ पे कोई गलती नहीं, बहुत समझदारी का game play by both the batsmen. So after 9 overs, the scores are 69 with 1 wicket down. Viraj sitting at 39 runs, Harman sitting at 12 runs. Talking about the run rate, the required run rate right now has reached to 9.29, whereas the current run rate is 7.67. Talking about the overall target, the target is 264. The team is already at 69, so they require 195 runs more in next 21 overs. That is 126 balls. Northern Knights, if we talk about them last game, we all saw they were able to take all the 10 wickets and they were able to like धीरे धीरे जो एक pressure develop करना उन लोगों ने चालू किया था on Panthers. That was very impressive. So this is the kind of gameplay we are definitely expecting from them today. But the kind of batting so far shown by Rising Titans, that has been impressive as well. With this first ball converting into a wide, Harman was searching for opportunity to maybe take a single on top of that. But again, like we said, no mistakes are allowed over here. No mistakes are required as of now. Just try to hold on to that wicket, take it to a decent number, and then convert every ball into a boundary. Again, keeping it very simple. This is the first over bowled by Abude. So far, एक ball, एक wide गई है. Second ball of the over. Again, impressive hit. सीधा fielder के हाथ में, but should be able to cover it with a run. Nice running between the wickets. So I think today we should be talking to the audience, the supporters who are here to support Rising Titans, the people who are here to support Northern Knights, to understand which team they are supporting and what is their expectation, what is their understanding that which team is gonna lift the trophy today. Again, round the wicket, काफी impressive bowling by Abhyuday,
काफी अच्छी लाइन एंड लेंथ को मेंटेन रखा है. इवन इट्स फर्स्ट स्पेल. सिर्फ एक वाइड और एक सिंगल आया अभी तक. फोर्थ बॉल ऑफ द ओवर. अगेन स्ट्रेट टू द फील्डर. कोई गलती नहीं यहाँ पे, कोई मिस्टेक नहीं. एंड गुड गेम प्ले टू कीप इट सिंपल. बट यस, ये जो चेंज किया है नॉर्थन नाइट्स ने टू ब्रिंग इन न्यू बॉलर्स, ट्राइंग टू put a kind of a speed breaker on the runs, on the boundaries that were happening back to back. वो काफी अभी तक सक्सेसफुल रहा है उन टीम के लिए. अगेन बहुत समझदारी से एक रन निकालते हुए यहाँ पे. With this, we are back with the last ball of this over. जिसके साथ 10 ओवर खत्म होने वाले हैं. द टीम हैव reached a score of 72 runs, somewhere similar to what Northern Knights had made in initial first 10 overs. But this last ball of this over, घुमा के मारने की कोशिश by Herman, but going straight to the fielder, but should be able to grab a run from there. So impressive batting so far by the team. After 10 overs, the scorecard is looking at 73 runs for Rising Titans with 1 wicket down. They still need 191 runs, required more in next 120 balls. Virat sitting at 40 runs, Harman sitting at 14 runs. If we are talking about the required run rate, that has reached to 9.55. If we are talking about the current run rate, that has dropped to 7.30. So definitely Northern Knights have done a bit of impressive job over here to first of all take out a wicket, then put a bit of a stoppage on the boundaries, on the extra runs that were coming from the fielding side of the things, from the bowling side of the things. So very impressive so far. Now going back to the Rising Titans, they definitely need to make sure up koi wicket nahi ja raha, and they are just continuing this partnership, getting the scoreboard to a very good, decent number to ensure the pressure can be given back to Northern Knights. Anshul is back to deliver his over. Again, talking about Anshul, very impressive bowling so far. He's the one who has got 1 wicket with 14 runs just given out of 3.1 overs. Second ball by Anshul. Again, आगे बढ़ के विराज ने खेलने की कोशिश की, but straight to the fielder, but should be able to get a run from there. And again, very impressive partnership and a kind of a strategy by Harman and Viraj, trying to keep the strike rotated, not trying to stick to one side. Bhali single se run aaye, but yeah, not trying to give everything like a dot ball. So yeah, impressive gameplay so far by the team. Talking about this particular over, we have got 2 runs so far. Harman sitting at 15, Viraj sitting at 41. Third ball of the over and impressively hit, but again landing in no man's land, but straight to the fielder, getting it back. So we have got 187 runs more to go. Target 264. 4 बॉल और रहती है इस ओवर की. आगे बढ़ के खेलने की कोशिश by Viraj. Very impressive fielding over here. Just giving 1 run so far. अभी तक इस ओवर में गिनती के सिर्फ 4 रन आए हैं. So definitely very impressive bowling by Anshul over here. Jersey number 1-1. Fourth ball of the over. Again, just trying to convert it into a single. Not taking way too much pressure over here. Just trying to make sure कि pressure वो जो थोड़ी देर पहले Rising Titans के ऊपर build हुआ था, वो दोबारा they are converting it 100% to Northern Knights. The way Viraj started, he should be continuing that. So talking about Viraj, 42 runs so far. Which I recall 4 चौके already मार चुके हैं. And आगे बढ़ के एक और बार खेला है. Need to see whether it's a catch or it's a 6.
And again landing between two fielders. A very, very big miss by the team. ये नहीं होना चाहिए था. Again, a second opportunity the team got to catch and bowl the star player who is already sitting at a 43 run. Break this partnership, but missed by the team. With this, we are back with the last ball of this over. Harman on strike. 17 ball, 17 run. Last ball. And just again trying to get into a single. Koi galti nahi wahan pe by both the batsmen. Good running between the wickets, and with this, after 11 overs, the score is 81 runs, 1 wicket down for Rising Titans. Viraj sitting at 43 runs, Harman sitting at 18 runs. The target is still 264. They need 183 runs out of next 19 overs. The required run rate has increased definitely to 9.63, and the current run rate has dropped to 7.36. So a bit of a pressure is getting back to Rising Titans, but till the time they have the wickets in hand, they are able to keep the strike rotating. It should be good to go. So the next bowler we have on the field is Abudeh, jersey number 44. Harman on strike. Very impressive liner length by the bowler over here. They are trying to understand कि जितना ज़्यादा डॉट बॉल्स होंगे उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं प्रेशर स्टार्ट होता है बिल्ड होना on the player, on the batsman, and that is the time when they start making mistakes. So impressive bowling again. एक डायरेक्शन दिखाई, प्लान वे में काफी खेला, पर फील्डर मौजूद, सिर्फ एक रन मिलेगा यहाँ पे. Over there, coming round the corner to bowl to Viraj. Impressive batting over here by Viraj. काफी अच्छे से स्ट्राइक किया, स्ट्रेट टू द फील्डर, बट एक रन बड़े प्यार से चुराते हुए. So अभी दे, this is like his second over. अभी तक उन्होंने जो रन दिए हैं सिर्फ 7 रन दिए हैं. तो yeah, very impressive bowling so far we have seen by Northern Knights. थोड़ा बहुत मिस फील्डिंग हमने देखी है, थोड़े बहुत जो चौके बाउंड्रीज आई थी, that we have seen. But yeah, overall they are definitely doing great. Again, a very impressive fielding done by the team member over here, trying to save the 4 run, trying to save the single over here. So yeah, very impressive. We still have 2 balls left for this particular over. On strike, we have Harman, the bowlers, and Abudeh Sahu. Again impressive, but fielder मौजूद, तो सिर्फ एक रन मिलेगा यहाँ पे. And we have the man of the hour, Viraj, on strike now. So it's been a couple of overs now. We have been waiting for half century for Viraj. So want to see whether it should be happening in this over or we might have to wait for a couple of more overs. Yeah, maybe a couple of more overs. But एक रन definitely यहाँ पे आता हुआ विराज के खाते में. So with this 12 overs down, the team Rising Titans is sitting at 86 runs with 1 wicket down. Harman sitting at 20 runs. Viraj sitting at 45 runs. The current run rate is 7.17. Required run rate is 9.89. And the target is 170 plus, required in 108 balls. So just 18 overs left, 3 overs before we have get into the drinks break. So Anshul is, I guess, back in the bowling side, and target यही रहेगा कि before they go for the drinks break, एक और wicket यहाँ पे मिलना चाहिए, so that they can give that pressure back to the Rising Titans, जो थोड़ा बहुत अभी कहीं ना कहीं Northern Knights के ऊपर भी है.
First ball of the over, very impressive, putting into a dot ball. Again, very impressive and very steady play we can see over here by Viraj, not getting way too excited. He wherever he found that he's converting those into fours, into sixes, but yeah, not trying to overplay it somehow. Again, back to the fielder. Fielder वहां मौजूद सिर्फ एक रन मिलेगा. चार बॉल और रहती हैं इस ओवर की. Whereas Anshul so far has been definitely a great successful. 22 रन सिर्फ दिए हैं उन्होंने अभी तक. 4 ओवर के स्पेल में ये पांचवा ओवर का. अगेन स्ट्रेट टू द फील्डर, वेरी इंप्रेसिव, कन्वर्टिंग इनटू अ डॉट बॉल. सिर्फ एक रन आए हैं अभी तक इस ओवर से. सो जो रन रेट कहीं करंट रन रेट 7 का था वो ड्रॉप हो चुके आ चुका है 6.96 पे. And required run rate has reached to 10.11. Again, a very impressive line and length, converting it into a dot ball. Two balls more to go from this particular over. Impressive hit. Good running between the wickets, but पीछे fielder मौजूद, सिर्फ एक रन आता हुआ. So far इस ओवर में आ चुके हैं 2 रन, 3 डॉट बॉल. Impressive bowling by Anshul. This is 5th over for Anshul. Overall, he has contributed just 23 runs, but got a very golden wicket for his team. Last ball by Anshul. Viraj on strike, playing at 46. हल्की सी मिसफील्ड यहाँ पे होते हुए बट पीछे फील्डर मौजूद, सिर्फ एक रन आएगा. So with this 13 overs down, Rising Titans sitting at 89 runs with 1 wicket down. Harman at 21 runs, Viraj sitting at 47 runs. The required run rate has reached to 10.29, whereas the current run rate is 6.85. The target is still 264, so the team need 175 runs in next 17 overs, which is equivalent to 102 balls.
So we are back in the game. Again, appeal for LBW, but not accepted by the umpire. The bowler we have, Abudev, so far 5 runs with 4 balls. Do bowler BB Ratui, Harman on strike, 21 runs. Straight to the fielder, but. And meanwhile, we definitely want to acknowledge the 50 scored by Viraj. 94 runs by Rising Titan and 52 runs have been contributed just by Viraj. Straight to the fielder, koi galti nahi. Good running between the wickets. So with this, 14 overs down, 95 runs, 1 wicket down. Required run rate is 6.79 and required run rate is 10.59 and the current run rate is 6.79. Virat sitting at 52, Harman sitting at 22. And with this, we are starting the 15th over. Team is already at 95. They're still chasing. And we have Anshul back to the gameplay. First ball going as a wide. So again, after this team को अब definitely एक wicket यहाँ पे चाहिए because the partnership they have been building is going great. So definitely they want to break this partnership. Good fielding by the team, but good running between the wicket as well. Just एक run आता हुआ so far. And talking about Anshul, the only bowler who has been able to get a wicket so far. 26 रन आए हैं अंशुल की तरफ से अभी तक within this 5 overs. So 52 runs Viraj. आगे बढ़ के खेलना चाहा but ball का direction ही opposite side. He got lucky कि वो stumps में touch नहीं हुई and went back to the fielder standing at the back. But एक रन आता हुआ इस ओवर से. Moving on to the next ball now. Harman back on track. उठा के मारने की कोशिश फिर बैट का निचले का हिस्सा लगता हुआ फील्डर वहां मौजूद भाग के रन आउट करने की कोशिश बट फील्डर पहुंच चुके थे. So impressive. Definitely we can see so far. इस ओवर में वो महसूस होता होगा कि दोनों टीम के ऊपर बराबर का वो प्रेशर है because it's still not decided which team has dominated this game so far. Rising Titans reaching at 99 with 1 wicket down, 14.3 overs. चौथी बॉल इस ओवर की. सिर्फ एक रन आता हुआ इस ओवर से. लास्ट 2 बॉल्स और बची. Harman is on strike. पांचवी बॉल घुमा के मारा है. काफी अच्छा साउंड भी आया है बैट्स का बट फील्डर वहां मौजूद. सिर्फ एक रन आएगा. ओवरऑल 6 रन आ चुके हैं इस ओवर से जिसमें से 5 सिंगल हैं, एक वाइट है एंड एक लास्ट बॉल स्टिल बचती हुई. Rising Titans already reaching at a score of 101 with 1 wicket down. Last ball of 15th over. And again एक डायरेक्शन देके just एक रन चुराते हुए. So again good strategy, 7 runs coming out of this over. After 15 overs, Rising Titans sitting at 102 runs with 1 wicket down. Required run rate is 10.80. Current run rate is 6.80.
Whereas the overall score, the chase is 264, and team has got just next 15 overs to chase that. So there's a short drinks break. We will be meeting after that. Thank you. This is MC Granshu signing off.
So we are back in the game now with 103 runs on the scoreboard by Rising Titans. Harman on strike, 25 runs. And Abuday straight to the fielder, सिर्फ एक रन आएगा. Impressive over so far. Last ball of the over. But again, going straight to the fielder. Overall इस ओवर से अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 रन आते हुए. So with this, after 16 overs, Rising Titans sitting at 105 runs, 1 wicket down. And now we want to see who is going to be the next bowler on the field. Is it going to be the captain himself? The star of the player today, 153 runs. Jersey number 1-2, the captain himself, Hitarth. Viraj on strike with 57 runs. So let's see. First ball of the over. Impressive straight to the fielder. कोई run नहीं. Dot ball. 16 ओवर टोटल हो चुके हैं. 14 ओवर्स का गेम बचा है. Target is still 159 that the team need to chase. एक sweep मारने की कोशिश. And a very impressive 4 again. Coming straight from Viraj. काफी प्लान वे में प्ले किया है ये शॉट. टाइम लिया, समझा बॉल कहाँ टप्पा खाएगी, किस डायरेक्शन में उसको ले जाना है. एंड दैट वाज वेरी प्लान्ड by Viraj himself, taking the score to 61 runs. So maybe Viraj should be having that mindset कि अब कोई विकेट नहीं गिरने देना, and he should be able to take it the scoreboard to 100, 150 plus himself. Third ball of this over, एक और बार घुमा के मारा है in the same direction, fielder मौजूद, but again हल्की सी मिसफील्डिंग यहाँ पे, but definitely एक 4 आते हुए straight from Viraj के बल्ले से, taking the score to 113 runs with 1 wicket down. थोड़ा सा महंगा ओवर साबित होता हुआ by the captain himself. Impressive fielding definitely, काफी अच्छी कोशिश थी वहां पे, but yes, मिस होता हुआ. इस ओवर में अभी तक आ चुके हैं 8 रन, 3 बॉलें हो चुकी हैं, 3 बॉलें और बची हैं. Viraj is on strike, so let's see how it goes. चौथी बॉल ऑफ दिस ओवर, and एक और बार घुमा के मारने की कोशिश, but I think that will be going straight to the fielder. And ज्यादा नहीं, सिर्फ 1 रन आएंगे. So again, keeping the strategy very straight. ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है. Just trying to keep the strike rotating to ensure that everything is pressure जो Rising Titans पे आना चाहिए, that is getting converted. Fourth ball of the over, एक और बार घुमा के मारने की कोशिश, but that should be going straight to the fielder. सिर्फ 1 रन आता हुआ again इस बॉल से. So अभी तक इस ओवर में टोटल आ चुके हैं 10 रन with just 1 dot ball so far. Viraj back on strike. आगे बढ़ के फुल टॉस को कन्वर्ट करने की कोशिश, but straight to the fielder, and again very impressive. यहाँ पे रन लेना चाह रहे थे, but मना किया दोनों प्लेयर्स ने. Good decision यहाँ पे. So with this 17 overs down, Rising Titans sitting at 115 runs with 1 wicket down. तेरह ओवर का ये गेम बच गया है, and definitely Northern Knights need to have some strategy यहाँ पे, need to have a game play यहाँ पे to ensure जो ये partnership धीरे धीरे strong build होते जा रही है, they are able to break it. Talking about the current run rate,
That is at 6.76, whereas the required run rate is 1146. So definitely एक difference वहां पे आ चुका है 4 रन का, but वही देखना पड़ेगा कितना convert हो पाता है by the team. Straight to the fielder, कोई गलती नहीं यहाँ पे, very impressive fielding. Ball over the jersey number 44. Second ball of the over, उठा के मारने की कोशिश, but again फील्डर वहां पीछे मौजूद. फील्डिंग में कोई गलती नहीं, सिर्फ एक रन आता हुआ. Baller we have over there, jersey number 44. Viraj on strike. So talking about the Chiefs, it's 148 runs still required. उठा के मारने की कोशिश, and that should be going for a 4, and that's a 4, everyone, coming directly from Viraj's bat. First inning में हमने कैप्टन को खेलते हुए देखा था with a very impressive batting of scoring 153, and in this inning we are definitely seeing Viraj doing all the wonders over here. He has already played 50 balls. The score he has done is 70 runs. 120 runs per team है जिसमें से 70 are just contributed by Viraj. Fourth ball of the over, आगे बढ़ के खेला है बैट्समैन के ऊपर से, पीछे फील्डर मौजूद, बट कोई गलती नहीं यहां पे, सीधे 4 रन के लिए. Impressive 4 runs. Another ball, another 4 runs by Viraj. आगे बढ़ के खेला बैट्समैन के ऊपर से, पीछे फील्डर मौजूद था, फील्डर ने काफी अच्छी कोशिश वहां पे, but definitely the speed of the ball were more impressive. 74 runs by Viraj. Last 2 balls of this over. 5th ball. Again, impressive मार के खेलने की कोशिश, and again another 4 runs coming directly from Viraj's bat. जितना भी प्रेशर था पूरा कन्वर्ट कर दिया विराज ने इस ओवर में, कोई कसर नहीं छोड़ी है. जो रन रेट था वो सारा का सारा बैलेंस आउट करने की एक ही ओवर में कोशिश चल रही है यहां पे. So the required run rate is at 11, the current run rate is at 7. आगे बढ़ के एक और बार उछाल के मारने की कोशिश, but fielder मौजूद, 2 steps to the fielder, strike rotate, but 78 runs by Viraj. Harman sitting at 28, and the overall score is 128 runs with 1 wicket down after 18 overs. बट इस ओवर की बात की जाए, इस ओवर में आए हैं पूरे के पूरे 14 रन अभी तक, जिसमें से 3 चौके थे और 2 सिंगल्स एंड 1 डॉट बॉल. $72 balls का और गेम बच गया है सिर्फ 12 ओवर्स का. तो नीड टू सी हाउ द टीम इज गोना कन्वर्ट द प्रेशर. नॉर्थर्न नाइट्स, यू नीड विकेट. सिर्फ ये एक मकसद, ये एक माइंडसेट अब होना चाहिए. हाउ दे कैन रिड्यूस द रन्स, हाउ दे कैन इंश्योर कोई चौके छक्के नहीं आ रहे, एंड दे आर वेरी कंसिस्टेंट विथ मेकिंग श्योर एक्स्ट्रा रन्स डेफिनेटली नहीं जाए. विराज ऑन स्ट्राइक विथ 78 रन्स. आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, एंड डेफिनेटली कन्वर्टिंग इट इनटू अनदर 4 एवरीवन बाय विराज. हितात अभी तक थोड़े महंगे साबित होते हुए, दिस इज हिज 8th बॉल, एंड अभी तक 14 रन आ चुके हैं उनकी बॉलिंग से, एंड अगेन नो विकेट सो फार. Viraj reaching at the score of 83. 133 is the overall team score, जिसमें से 83 are just contributed by Viraj. So Viraj is like now finding all the gaps जहां पे मार के वो चौके छक्के कहां से क्या निकाल सकते हैं. पीछे फील्डर मौजूद, मिसकम्युनिकेशन थोड़ा सा हुआ, बट सही टाइमिंग पे they came back to the crease.
सो डॉट बॉल एक आती हुई यहाँ पे 3 बॉल्स के बाद 4 रन आए अभी तक इस ओवर से 2 डॉट बॉल 1 चौका ओवरऑल स्कोर इज 133 रन्स विद 1 विकेट डाउन चौथी बॉल इस ओवर की फुल टॉस को फुल स्पीड में दिया बट अगेन पीछे फील्डर मौजूद बट 1 रन डेफिनेटली यहां पे चुराएंगे ओवरऑल 5 रन आते हुए अभी तक इस ओवर से 2 गेंदें अभी और बची हैं इस ओवर की हरमन ऑन स्ट्राइक विद 28 runs and Hitarth has to show his magic now. Last match में हमें याद है he has done some magic, he has taken some good wickets and good call out, but no, not given. Again, we can see that pressure happening on both sides of the teams. It's not just one team who is having this pressure, it's on definitely on the both side. Last ball of this over. It should be a catch. थोड़ा सा अगर और आगे होते तो definitely a catch थी. But impressive over so far. This one by Hitarth. सिर्फ और सिर्फ 5 रन आए हैं इस ओवर से. And overall, after 19 overs, the score is at 134 runs, 1 wicket down, current run rate 7.12, required run rate 11.64. Harman batting at 28 runs, Viraj batting at 84 runs. 130 runs more required in next 11 overs, 66 balls to be precise. एंड ये जो एक साझेदारी अभी बिल्ड हुई है इन दोनों बैट्समैन के बीच में दिस इज समथिंग डेफिनेटली द टीम नीड टू ब्रेक क्योंकि हम फर्स्ट इनिंग में नॉर्थन नाइट्स की इनिंग में देख चुके हैं जब हितार्थ एंड अर्नव की पार्टनरशिप हुई थी कितना अच्छा स्कोर बोर्ड को लेके गए थे कितनी अच्छी की 100 रन्स प्लस की उन्होंने पार्टनरशिप प्ले अराउंड की थी एंड नाउ वी हैव अ न्यू बॉलर ऑन द फील्ड दैट इज गौरव लास्ट इनिंग में हम लोगों ने देखा था लास्ट मैच में काफी इंप्रेसिव बॉलिंग गौरव द्वारा भी रही थी काफी अच्छी लाइन एंड लेंथ को उन्होंने मैनेज किया हुआ था सो लेट्स सी हाउ दिस टाइम इज गोना डिलीवर वी हैव विराज ऑन स्ट्राइक सिटिंग एट 84 रन्स फ्रॉम 57 डिलीवरीज फर्स्ट बॉल ऑफ दिस ओवर आगे बढ़ के खेलने की कोशिश स्ट्रेट टू द फील्डर सिर्फ 1 रन आता हुआ यहां पे Harman is back on strike. 28 runs from 40 deliveries. अब थोड़ा मेरे हिसाब से हरमन को भी should also contribute more. थोड़े और runs उन्हें निकालने पड़ेंगे because जितनी डॉट्स बॉल होती जाएंगी उतना ज्यादा प्रेशर बिल्ड होता जाएगा because it's just 65 balls, 64 balls that we are left with, and still the target is 129 runs. Third ball of the over by Gaurav. उठा के मारने की कोशिश की गई है पीछे देखना पड़ेगा फील्डर है कि नहीं एंड दैट्स अ 4 माय गाइस दैट्स अ 4 इंप्रेसिव 4 बाय हरमन यहां पे कोई गलती नहीं थोड़ा टाइम लिया प्लान किया प्लेस किया एंड जस्ट हिट इट लाइक एनीथिंग एंड लुकिंग एट द हाइट ऑफ दिस बॉल आल्सो काफी अच्छी हाइट के साथ ये बॉल गई थी अगेन वॉचिंग इट इन स्लोमो काफी इंप्रेसिव बैटिंग यहां पे एंड दैट इज अगेन नॉट गिवन एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन लास्ट मैच में हमने गौरव को देखा था काफी सारे एलबीडब्ल्यूज भी निकालते हुए सो या लेट्स सी हाउ इट गोज इन दिस पर्टिकुलर वन 2 बॉलें और बचती हुई इस ओवर की हरमन ऑन स्ट्राइक आगे बढ़ के खेलने की कोशिश फिर से उठा के मारा है नीड टू सी इफ इट्स गोइंग टू बी कैच एंड दैट्स अ कैच आउट एवरीवन That's the break the team has been looking forward for. That's the one wicket the team has been looking forward for. And they finally got it. Gaurav. Impressive bowling by Gaurav and Harman going back to the pavilion. Very impressive bowling by गौरव यहां पे पहली बॉल पे चौका आया दूसरी बॉल पे अगेन थोड़ी सी स्लो रखी बॉल को ताकि बैट्समैन आगे आके खेले
थोड़ा सा और उसको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस रहता है आफ्टर प्लेइंग अ बिग शॉट. उसी का फायदा उठाया गौरव ने एंड इट वाज आउट. इट वाज अ कैच आउट. काफी इंप्रेसिव बॉलिंग बाय गौरव यहाँ पे. पहला ही ओवर है, सिर्फ 5 रन अभी तक दिए हैं जिसमें से एक सिंगल, एक चौका एंड डेफिनेटली गेटिंग अ विकेट. एक ब्रेक थ्रू जो नॉर्थन नाइट्स को चाहिए था अभी. 62 बॉल्स का गेम, माफी चाहूंगा 61 बॉल्स का गेम मोटा मोटा बचता हुआ अभी. एंड द टीम स्टिल हैव अ टारगेट ऑफ 125 रन्स. रन रेट पहुंच चुका है 12. रिक्वायर्ड रन रेट इज जस्ट 7. सो डेफिनेटली राइजिंग टाइटंस को थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा. विराज को हैवी लिफ्टिंग करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा. वेयर एज द सेकेंड batsman should be just coming and supporting him. कि okay man, you play the big shots. Let me make sure कि wickets नहीं गिर रहे हैं. I'm just rotating the strike, singles. जहाँ पे जितना support हो पा रहा है, they are contributing in that way to ensure कि अभी personal से ज़्यादा it's more of a team efforts that will be helping in winning this game. So we are left with one ball of this particular over. On strike, we will have new batsman. NS. Jersey number 34. Required run rate 12. Current run rate 7. The target of 125 and 61 balls. Last ball of the over, straight to the fielder, dot ball. काफी इंप्रेसिव बॉलिंग यहाँ पे बाय गौरव. सिर्फ 5 रन आते हुए इस ओवर से. सिर्फ एक चौका, एक डॉट बॉल, एक सिंगल और एक विकेट. तो काफी इंप्रेसिव बॉलिंग बाय गौरव. एंड इसी के साथ आफ्टर 20 ओवर्स, Rising Titans sitting at 139 runs with 2 wickets down, a target of 125 in next 60 balls. तो आखिरी 10 ओवर का गेम है एंड वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द सपोर्टर्स ऑफ नॉर्थन नाइट्स, राइजिंग टाइटंस, क्योंकि डेफिनेटली सब के सब थोड़ा थोड़ा अब डर लगने लगा है सबको बिकॉज इतना टाइट कंपटीशन हो चुका है दोनों टीम के बीच में. हाउ इट्स गोना बी. फर्स्ट बॉल ऑफ दिस ओवर एंड अ इंप्रेसिव 4 अगेन बाय विराज. कोई गलती नहीं विराज द्वारा. जस्ट ट्राइंग टू फाइंड द राइट directions, right gaps, just showing the ball to that particular gap and converting it into a boundary. So impressive opening by Viraj of this particular over. Viraj पहुंच चुके 89 runs पे. The bowler we have is Hidat. अभी तक हितात के 2 ओवर हो चुके हैं. This is his 3rd over. आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, उठा के मारा है. Let's see. It's थोड़ा सा आगे आना था प्लेयर को. यहां पे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, स्पेशली फॉर दिस बिग विकेट. क्योंकि अगर ये विकेट मिलता तो डेफिनेटली राइजिंग टाइटंस के लिए एक थोड़ा सा शॉकिंग होता, एक थोड़ा सा गेम में वापस आना मुश्किल होता, जो काफी ज्यादा हद तक नॉर्थन नाइट्स के फेवर में जाता. एंड इट्स ऑन स्ट्राइक नाउ हितात फ्रॉम द बॉलिंग साइड. कॉल की गई थी फॉर अ रन बट cancel at the last moment. And again, right now, they should not be doing such mistakes of getting run out or anything like that. They need to make sure कि next 2 to 3 overs, they are just holding on to the wickets. जितने runs निकाल पा रहे हैं, and then go into that aggressive game. So 3 balls more to go. Very impressive bowling यहाँ पे. The kind of line and length shown so far by the team members, especially by the Northern Knights, have been very impressive. काफी अच्छी line and length को maintain करते हुए उन्होंने bowling की अभी तक. 4th ball of the over, 5th ball of the over, and again a dot. अभी तक सिर्फ 5 रन आए हैं इस ओवर से, जिसमें से एक चौका है और एक सिंगल. रन रेट को काफी हद तक कंट्रोल में रखा हुआ अभी तक नॉर्थन नाइट्स ने. लास्ट बॉल ऑफ द ओवर एंड इट शुड बी आउट.
स्टेप आउट करके काफी इंप्रेसिव तरीके से जो एक ब्रेक थ्रू चाहिए था नॉर्थर्न नाइट्स को, वो लेके आए हैं टीम. With this, we are left with 21 overs done. Rising Titans sitting at 144 runs, 3 wickets down. Viraj sitting at 90 runs. And let's see it again in slow motion how it happened. काफी अच्छी स्टंपिंग थी यहाँ पे बाय द विकेट कीपर, कोई गलती नहीं विकेट कीपर द्वारा. And the impressive thing about these kids are the kind of game they are playing. They are not letting us see or believe that they are just under 14. Even if we look at this particular moment right now, kitna impressive moment tha. The team has been very, very aggressive. The pressure they have been feeling, the stamina they have been showing. A small drinks break happening so far, but a quick update देते हुए for overall match. Rising Titans after 21 overs sitting at 144 runs with 3 wickets down. Viraj sitting at 90 runs, playing 60 balls, and then we have new player on the field, Avyan J. And let's see who's going to be the new bowler coming from Northern Knights to make sure जो थोड़ी बहुत यहाँ पे सपोर्ट आया है, थोड़ा एक अगेन एक चहल पहल चालू हुई है मैदान में, वो दे आर एबल टू कन्वर्ट इट इनटू देयर फील्ड इन देयर डायरेक्शन. 9 overs more to go, 54 balls more to go, target of 120 runs still to chase. Viraj playing at 90. आज ये देखना पड़ेगा if Viraj is able to break the record of 153 set by none other than Hitat, captain for Northern Knights. We have Gaurav back as the bowler. आगे बढ़ के खेलने की कोशिश की गई है, कोई फील्डर वहां मौजूद नहीं, बट एक पीछे फील्डर भागते हुए आ गए. So 1 run only from this ball. But talking about Gaurav, very impressive. जो ब्रेक थ्रू एक टीम को चाहिए था वो उन्होंने लाके दिया, जो एक पार्टनरशिप ब्रेक करना था. That happened because of Gaurav. So overall 7 बॉलें अभी तक डाली हैं उन्होंने एंड 6 रन और 1 विकेट निकाला है. सेकंड बॉल बाय गौरव ऑफ दिस ओवर. काफी इंप्रेसिव, काफी स्लो एंड टाइमली वे में इसको खेला है. अव्यान ने प्रॉपर टाइम लिया, प्रॉपर डायरेक्शन दिया टू गेट इट इनटू अ सिंगल. स्ट्राइक रोटेट होती रहे. 2 बॉल्स 2 सिंगल आ चुके हैं अभी तक इस ओवर से. विराज इज बैक ऑन स्ट्राइक विद 91 रन्स. थर्ड बॉल ऑफ द ओवर, अगेन डायरेक्शन दी है, फील्डर वहां मौजूद. काफी अच्छी फील्डिंग फील्डर द्वारा, बट अगेन सेम टाइम ग्रेट रनिंग बिटवीन द विकेट्स बाय बोथ द प्लेयर्स. ट्राइंग टू रोटेट द स्ट्राइक. अगेन जो स्ट्रैटेजी, जो गेम प्ले होना चाहिए कि अभी प्रेशर नहीं लेना है, जस्ट कीप रोटेटिंग द स्ट्राइक. सिंगल, सिक्सेस, फोर्स, दे विल बी कमिंग फॉर श्योर, बट अभी के लिए जस्ट कीप द मोमेंटम गोइंग. फोर्थ बॉल ऑफ द ओवर, अगेन फील्डर मौजूद, कोई गलती नहीं यहां पे. Converting it into a dot ball. दो बॉल और बचती हुई इस ओवर की. The score is at 147. फिफ्थ बॉल ऑफ द ओवर. उठा के मारने की कोशिश, बट फील्डर वहां मौजूद. सिर्फ 1 रन मिलेगा यहां पे. Last ball of the over left. The team is sitting at 148 runs. Viraj sitting at 92 runs. So I'm pretty much sure इसमें तो 150 होना चाहिए. Let's see. Come on, that's a very great mess. Very great mess, and this should not be happening. This should not be happening.
That was a very, very, very big miss by Rising Titans, by both the players. Coordination की कमी यहाँ पे, and Gaurav again getting that second wicket. मिसकम्युनिकेशन हुआ यहाँ पे. दोनों प्लेयर्स वर नॉट रेडी कि किसको भागना है, किस डायरेक्शन में जाना है. द कीपर वॉज रेडी, द फील्डर वॉज रेडी, एंड द कीपर वॉज जस्ट ट्राइंग टू प्ले अराउंड विद दिस. तो डेफिनेटली नॉर्थर्न नाइट्स मस्ट बी फीलिंग कि स्वाद आ गया. Let's see that again in slow motion. Action replay. And this particular thing is definitely gonna cost today Rising Titans. क्योंकि विराज was the only player जिसने पूरा का पूरा रन रेट, पूरा का पूरा प्रेशर, सब चीजें अपने ऊपर संभाल रखा था. आगे आए, खेला. He didn't notice कि सामने वाले प्लेयर ने भागा है कि नहीं. But definitely Northern Knights ने कोई गलती नहीं की यहाँ पे. So with this, we have 22 overs completed. Rising Titans sitting at 148 runs with 4 wicket downs. We have 2 new players on the field. Avyanji with 2 runs. Bhavik about to get started. And talking about the chase, 8 over का game सिर्फ रह गया है. And the bowler we have is Kride. पहला ओवर है Kride का. And अब जो रन रेट की बात की जाए तो रिक्वायर्ड रन रेट आ चुका है रिक्वायर्ड रन रेट आ चुका है 14 पे और करंट रन रेट है 6 पे. सो काफी हद तक अपनी तरफ झुका चुके हैं इस मैच को नॉर्थर्न नाइट्स. थोड़ी सी मिसफील्ड यहाँ पे होते हुए, बट डेफिनेटली ये 4 मिलना चाहिए यहाँ पे. And that's a 4 coming from Bhavik's bat. और इसी के साथ टीम ने कंप्लीट किए अपने 150 स्कोर, 153 रन्स. बट स्टिल 100 प्लस रन्स की अभी जो जर्नी है, 111 रन्स की जो जर्नी है, वो करनी बाकी है विद 6 विकेट्स इन हैंड. 4 balls more to go, third ball of this over, and that should be a wide. But yeah, we have to be very impressive what kind of runs team is giving right now. कितने extras दिए हैं, कितने wides दिए हैं, कितनी no balls दिए हैं. काफी impressive यहाँ पे Northern Knights द्वारा. Impressive batting again, converting into another 4. थोड़ा सा महंगा होता हुआ ये over. The team still trying to strike hard, still trying to fight back यहाँ पे. बट ये जो लास्ट गलती की थी टीम ने ऑफ लूजिंग वन ऑफ द स्टार प्लेयर्स जस्ट बिकॉज ऑफ अ सिली मिस्टेक, दैट वाज रॉन्ग. वो आज शायद उसका भुगतान राइजिंग टाइटंस को देना पड़ेगा. सो क्रेदे की 3 बॉलें अभी और रहती हुई, अभी तक इस ओवर में ऑलरेडी 10 रन आ चुके हैं. सो लेट्स सी, 3 balls more to go. On strike we had Bhavik with 8 runs. उठा के खेला है, यहां पे देखना पड़ेगा. फील्डर मौजूद, कोई मिसफील्डिंग नहीं, कोई गलती नहीं यहां पे. गुड फील्डिंग बाय द टीम एंड गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स बाय द टीम. 2 बॉल और रहती हुई इस ओवर की. अब ये ऑन स्ट्राइक अगेन एक और अपील की गई है, यहां पे देखना पड़ेगा. And that's considered out. This is what
team has been waiting for. और यहाँ पे definitely तारीफ करनी पड़ेगी of the wicket keeper. दो step out जो किए हैं, they both have been very impressive. Especially talking about Bhavik जो आए थे and he was kind of dominating the field. Another player who was dominating the field, they have taken them out. एक बार एक्शन रिप्ले देखेंगे हम लोग दोबारा. काफी ज्यादा आगे आ चुके थे, मिस हो चुकी थी, एंड जब तक ही रियलाइज दैट ओके ही हैज टू बी विद इन दैट क्रीज, इट वाज ऑलरेडी टू लेट. एंड विकेट कीपर द्वारा बिल्कुल भी कोई गलती नहीं है यहाँ पे. एक और बार इस एंगल से देखते हैं. काफी आगे आ चुके थे एंड तुरंत विद इन लाइक कपल ऑफ सेकेंड्स, विद इन लाइक अ 1 or 2, इट वाज stepped out by the wicketkeeper. Very impressive. The next batsman we have is Bharti J. And we still got one ball more to go for Kride. तो डेफिनेटली नॉर्थर्न नाइट्स ने काफी हद तक मुकाबला अपनी तरफ झुका लिया है. स्टार्टिंग जैसे हुई थी, काफी डोमिनेटिंग स्टार्ट किया था राइजिंग टाइटंस ने. कोई गलती नहीं कर रहे थे, कोई विकेट नहीं जाने दे रहे थे, बट एक के बाद एक जो गलतियां हुई हैं टीम से, और वहीं पे नॉर्थर्न नाइट्स की टीम ने कोई गलतियां नहीं की. जितनी गलतियां की थी इन द इनिशियल स्टार्ट ऑफ द मैच, वो सारी रिकवर की टीम ने. सो वी स्टिल गॉट 105 runs to chase in next 7 overs plus 1 ball. Last ball of the over. On strike Bharti J. Bowler Kride. उठा के मारने की कोशिश की है, देखना पड़ेगा पीछे फील्डर है कि नहीं, और सीधे 4 रन के लिए खेला है Bharti J. Impressive over with this 23 overs down. Rising Titans sitting at 163 runs with 5 wickets. The last over has been a mix of boundaries, a mix of wicket, but overall so far we can see Northern Knights dominating the match so far. 7 overs, more to go. 101 runs is the target that they are still chasing in next 42 balls. On strike we have Bhavik, and the bowler is none other than Gaurav. 2 ओवर्स डाले अभी तक गौरव ने, सिर्फ 9 रन दिए हैं, 1 विकेट मिला है. वेरी इंप्रेसिव बॉलिंग, काफी अच्छी स्पिन थी. पहली बॉल डॉट. Run the wicket. Second ball of the over. Again, impressive batting, but उससे भी impressive fielding. Very impressive fielding by the player वहां पे. 2 डॉट बॉल. Again, जितनी ज्यादा डॉट बॉल आएंगे, अभी काफी हद तक मैच is already with Northern Knights. They just need to make sure कितना calmly they can just end it. काफी impressive batting यहाँ पे प्लेयर द्वारा, बट अगेन फील्डर वहां पे मौजूद, सिर्फ 1 रन मिलेगा. इस ओवर में सिर्फ आए अभी तक 1 रन. Bharti J on strike. एक और बार आगे बढ़ के खेलने की कोशिश, साइड एज लगता हुआ, बट फील्डर मौजूद. हल्की सी मिस फील्डिंग होती हुई यहाँ पे फील्डर द्वारा बाय जर्सी नंबर 19, बट डेफिनेटली 1 रन आता हुआ टीम के खाते में. एंड वी हैव भाविक बैक ऑन स्ट्राइक. 2 बॉल्स और रहते हुए गौरव की. अगेन रन द विकेट. 5th बॉल. उठा के मारा है यहां पे, देखना पड़ेगा. Landing in lone lands land and converting it into a easy 4 by the team. 6 रन आते हुए अभी तक इस ओवर से. 2 सिंगल्स, 1 चौका, एंड काफी अच्छी हाइट भी दी थी इस बॉल को, फील्डर से काफी दूर, एंड कोई गलती नहीं यहां पे.
So Bhavik sitting at 14. रन रेट जो अभी करंट है वो है सिर्फ 7 पे, रिक्वायर्ड इज 15. तो टीम को डेफिनेटली एक और उठा के खेला एंड दैट शुड बी एंड इट्स आउट. सीधा फील्डर के हाथ में, सीधा फील्डर के हाथ में. जितनी हाइट थी एवरीवन वाज अज्यूमिंग इट टू बी अ 6, बट सीधा फील्डर के हाथों में. कोई गलती नहीं यहां पे बाय द फील्डर, बाय द बॉलर. काफी अच्छी बॉलिंग थी, काफी अच्छी लाइन एंड लेंथ थी. सीधा उठा के खेला एंड सीधा फील्डर के हाथ में गई यहां पे. एंड कोई गलती नहीं बाय द फील्डर. Northern Knights, like we were saying, dominating this match again. जो एक शुरुआत हुई थी वो थोड़ी सी लड़खड़ाई वहां पे, बट उसके बाद जो एक उन्होंने कम बैक किया है, जो यहां पे विकेट्स की लाइन लगाई है, दैट हैज बीन वेरी इंप्रेसिव. 6 ओवर्स का ये गेम और रह गया है. 4 विकेट और रहते हैं. 169 is what the team is sitting at. Rising Titans with 6 wicket down. 95 runs more required in next 36 balls. Required run rate 15.83. Current run rate 7.04. Northern Knights dominating this game like anything. So देखते हैं who is going to be the next bowler on the field. Jersey number 4. We have new player from Rising Titans, Prahan S. पहली बॉल खेलते हुए, and that's a wide. But again, like we were talking about, काफी ज्यादा कंट्रोल किया Northern Knights tend to ensure they are not giving up that much wides, they are not giving that much extra runs. काफी कंट्रोल किया है उन लोगों ने उस चीज पे, and definitely that's the result they are getting. First ball of this over again. काफी अच्छा स्टैम्प्स के साथ खेला, बट अगेन ड्रैग टू द फील्डर. Badi G on strike, and the bowler we have is R. Nandan. Jersey number 4. Second ball of the over, थोड़ा उठा के खेला, and that's out everyone. एक और विकेट यहां पे गिरता हुआ by Rising Titans, and यहां पे कोई गलती नहीं by the team that is one and only Northern Knights. एक और बार let's see that in slow motion. काफी अच्छे एनर्जी के साथ he tried to pull it off, but straight to the fielder, and वहां पे फील्डर द्वारा कोई भी गलती नहीं. 7 wickets are down, 3 more wickets to go. इस बार लग रहा है Northern Knights ने सेम स्ट्रेटेजी, सेम प्लान बनाया है like they did in the last match. All the 10 wickets down, they are going to send the complete team home. And very impressive bowling by Anandan. This is his 3rd over. He has given 27 runs so far with just 1 wicket. Talking about the required run rate, it's reached 16. Current run rate is 6.99. But if we are talking about the target, the overall target, yes, 94 runs required in 34 balls and with just 3 wickets in hand. So बस ये देखना पड़ेगा क्या ये मैच पूरा का पूरे 30 ओवर चलेगा या उससे पहले Northern Knights are gonna finish this, end this, dominate this. 3rd ball of the over. Lavyansh on strike. Again converting into a dot ball. And the best thing Northern Knights has done, अब जो दोनों players हैं field पे, both are new players. एक player ने अभी just first ball खेली and second player will be playing his first ball. So काफी अच्छा control कर रखा है उन लोगों ने game पे अभी. 4th ball of the over, need to see. But that should be going for a 4, and that's a 4. But Northern Knights should not be taking tension of this for sure, because जो number है, जो chase है, वो अब काफी difference आ चुका है. But yeah, definitely target यही रहेगा जो 90 runs का अभी भी chase बच रहा है इन 32 बॉलों में.
उसको वो काफी कंट्रोल कर पाए एंड जो जो 3 विकेट्स हैं लेट्स गेट इट फोर्थ बॉल ऑफ द ओवर कन्वर्टिंग इट इनटू अ डॉट अभी तक इस ओवर से सिर्फ आए 5 रन और 1 विकेट एंड आखिरी बॉल रहती हुई So definitely, Ajka, I guess if Rising Titans are going to lose the game today, the biggest learning and the lesson should be for them regarding that one single run out, that mistakenly run out जो हुआ था वो नहीं होना चाहिए था. But having said that, we are done with 25 overs for this game. Rising Titans sitting at 174 runs with 7 wicket down, 90 runs more to go in next 5 overs equivalent to 30 balls. We have Prahan on strike, gonna play his first ball, and we have another batsman, Lavyansh, with 4 runs out of 4 balls. And bowler, we have Gaurav, who has done 3 spells, 3 over. Very impressive bowling by Gaurav so far. सिर्फ 15 रन आए हैं उनके ओवर से और 2 विकेट्स. So we're back again. Second ball of the over. अभी तक सिर्फ 1 रन आया है इस ओवर से. And seems like now the bowler should be just aiming for कि okay जो last 3 विकेट है कौन वो बॉलर होगा जो वो last 3 विकेट चटकाएगा. काफी इंप्रेसिव फील्डर से यहां मिस फील्ड थोड़ी सी होते हुए और 4 रन. Rising Titans still trying to show that they have that energy, they have that jazba baki to bring this game back. But अब वो जो डिफरेंस है, वो जो रन चीज है, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है. So looking at this over so far, 5 रन आ चुके हैं इस ओवर से, 1 सिंगल और 1 चौके के साथ 3 गेंदें रहती हुई इस ओवर की. फोर्थ बॉल ऑफ द ओवर उठा के मारा है, पीछे देखना पड़ेगा फील्डर है कि नहीं. और ये मिस हुआ यहां पे, मिस नहीं होना चाहिए था, बट स्टिल काफी इंप्रेसिव फील्डिंग यहां पे. At least they tried to stop it, not let it go for a 4 or 6. 2 बॉल और रहती हुई इस ओवर की. उठा के मारने की एक और बार कोशिश की गई है, देखना पड़ेगा. एंड काफी इंप्रेसिव फील्डिंग यहां पे, काफी इंप्रेसिव फील्डिंग बाय द टीम प्लेयर्स. Waiting for the umpire's decision. I guess that should be just converted into 1 run. Yes. And with this, we have last ball of this over. Again, एक और मिस फील्ड होते हुए यहां पे, बट पीछे फील्डर मौजूद, सिर्फ 1 या 2 रन ले पाएंगे यहां पे. So with this, everyone, we are done with 26 overs of the second inning. Rising Titans sitting at 182 runs with 7 wicket downs. The target is still 82 runs to chase the next 24 balls with only 3 wickets in hand. We have 2 batsmen on the field. Prahan with 2 number and then Lavyansh with 10. The bowler we have Kride, पहली ball is over की, full toss उठा के मारा है, देखना पड़ेगा पीछे फील्डर है कि नहीं, but that's a 4. Impressive 4 by the team. The team is definitely saying, Rising Titans, ki if we are going down, we won't be going down so easily. But the kind of momentum they are trying to build up, अब थोड़ा सा अगर ये 20 ओवर 18 ओवर के अराउंड हो रहा होता तो that could have been like save them a lot. अभी जो रन चेस है वो इतना बिगड़ नहीं होता, जो अभी भी still 78 runs है. Again, one more misfield by the team member.
एक और चौके में कन्वर्ट होते हुए 8 रन आ चुके हैं इस ओवर में 2 गेंदों से। बहुत ही शानदार मैच होता वो राइजिंग टाइटंस और नॉर्दर्न नाइट्स का। ये अच्छा शॉट, दोनों ही टीम जद्दोजहद करती हुई यहाँ पर बहुत ही शानदार मैच खेलती हुई एट द एंड ऑफ द डे cricket wins and that is only going on right now. बहुत ही शानदार हवा में एक टक्कर में के हाथों में सिग्नल मिलता हुआ दोनों ही टीम कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है मैच जीतने का। देखते हैं कौन सी टीम जीती है। With 2 balls more to go, लव्यांश on strike. एक और बार फुल टॉस मारने की कोशिश बट सीधा फील्डर के हाथों में। कोई रन नहीं यहाँ पे, डॉट बॉल। टीम हैज रीच्ड 192 runs. लास्ट बॉल ऑफ दिस ओवर। एक और बार मारने की कोशिश, पीछे फील्डर मौजूद, कोई मिस फील्डिंग नहीं यहाँ पे, काफी इंप्रेसिव फील्डिंग बट 1 रन मिलता हुआ टीम को। So with this, we are done with 27 overs of this game. The team is sitting at 192 runs with 7 wicket downs, still a target of 73 runs to chase. Sorry, 71 runs to chase in 18 balls. अब देखना पड़ेगा नॉर्थर्न नाइट्स की तरफ से कौन सा बॉलर आने वाला है। एंड अगेन व्हाट्स द स्ट्रैटेजी। काफी हद तक नॉर्थर्न नाइट्स ने अपनी तरफ ये गेम को डोमिनेट कर लिया है बट अगेन टिल द टाइम राइजिंग टाइटंस हैव 3 विकेट्स इन हैंड एंड जैसे क्रिकेट में बोला जाता है लास्ट बॉल तक किसी को नहीं पता क्या हो सकता है। सो वी ऑल आर एक्साइटेड, वी आर रेडी टू सी कि क्या होने वाला है। एंड द बॉलर वी हैव इज क्रिशु, जर्सी नंबर 8, पहली बॉल टू बी प्लेड बाय लव्यांश। 3 overs more to go, 18 balls more to go, target 71 runs. And with this first ball of the over, and that's a no ball. थोड़ा सा अभी जो लास्ट 3 ओवर्स है टीम को थोड़ा सा और नॉर्थर्न नाइट्स को काफी टाइट करना पड़ेगा बॉलिंग को। दे कैन नॉट बी हैविंग दैट माइंडसेट कि ऑलरेडी जीत चुके हैं तो लेट्स गो अहेड एंड डू दैट। अगेन एक और नो बॉल आते हुए जिसको कन्वर्ट किया एक और रन से। तो डेफिनेटली राइजिंग टाइटंस इतनी इजीली हार नहीं मारने वाले हैं एंड नॉर्थर्न नाइट्स को भी ये समझना पड़ेगा कि ओके द चेज इज बिग बट इतना इजी लेट गो नहीं करना है इन लोगों को। सो अगेन गोइंग फॉर द फर्स्ट बॉल। यहां पे बॉल चेंज होते हुए सही डिसीजन बाय द कैप्टन, क्योंकि डेफिनेटली जिस मोड पे अभी गेम आ चुका है 3 ओवर अभी भी बचते हैं। फर्स्ट बॉल ऑफ दिस ओवर काफी इंप्रेसिव हिट बट अगेन स्ट्रेट टू द फील्डर, डॉट बॉल। और यही चाहिए, अभी कोई एक्स्ट्रास नहीं जाने चाहिए। 1 रन 2 रन सिंगल्स चौके छक्के सबको कंट्रोल करना है। डेफिनेटली फोकस विकेट पे करना है कि अभी वो 3 विकेट लेके जीते या मैच जीते। एट द एंड ऑफ द डे नॉर्थर्न नाइट्स नीड टू फोकस ऑन द मैच। उठा के मारा है, देखना पड़ेगा पीछे फील्डर है कि नहीं। 1 टिप बाउंस स्ट्रेट टू द फील्डर बट गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स एज वेल। सोलह बॉलें बचती हुई सो इस गेम की 198 पे राइजिंग टाइटंस पहुंच चुके हैं। एक और बॉल उठा के मारने की कोशिश, बॉलर के ऊपर से, पीछे फील्डर मौजूद बट 1 रन मिलेगा।
टीम गेंदें और रहते हुए इस ओवर की एंड टीम पहुंच चुकी है 199. राइजिंग टाइटंस सिटिंग एट 199 विद 7 विकेट डाउन एवरीवन. एंड एक और बार स्लो मोशन में देखेंगे कैसे गौरव कुड हैव ऑलमोस्ट गॉट इट बट थोड़ा सा मिसकैलकुलेट हुआ, हाथ की मूवमेंट सही से नहीं बैठी. एंड दैट्स आउट एवरीवन. काफी इंप्रेसिव बॉलिंग बाय गौरव. एक और बार एक्शन रिप्ले देखेंगे. एंड अब आ चुके हैं नॉर्थर्न नाइट्स बैक इन फॉर्म. दे आर सुपर हैप्पी, दे आर सुपर एक्साइटेड क्योंकि अब सिर्फ गेम बच गया है 2 विकेटों का और सिर्फ 12 बॉलों 14 बॉलों का, माफी चाहूंगा. एक और बार देखते हैं कि कैसे ये लास्ट विकेट गया था. काफी आगे बढ़ गए थे बट अगेन यहां पे कीपर की डेफिनेटली तारीफ करनी पड़ेगी. ही मेड श्योर दैट 3 विकेट्स आज उन्होंने जो नॉर्थर्न नाइट्स के लिए निकाले हैं, दैट ऑल केम फ्रॉम द विकेट कीपर ऑफ नॉर्थर्न नाइट्स. एक और बार स्लो मोशन में देखेंगे द कंप्लीट एंगल. काफी आगे आप बढ़ चुके थे बट विकेट कीपर ने 1 सेकेंड की भी कोई गलती नहीं की. वेरी इंप्रेसिव लीड डन बाय द विकेट कीपर यहां पे. सो नाउ गेम बच गया है सिर्फ और सिर्फ कुछ गेंदों का. 15 बॉल 65 रन. And the new player आराम से करता हूँ आज. एक बार आज ये वाला होते एक बार बात करता हूँ. बिठाता हूँ तेरे सामने. So with this, we are left with इसी के साथ नेक्स्ट बॉल. काफी इंप्रेसिव यहां पे अगेन भागने का डिसीजन एंड ये जाते हुए 4 रन के लिए. थोड़ा सा मिस हुई थी विकेट के पास से, काफी ज्यादा क्लोज थी बट टीम चेज भी नहीं कर पाई और मुफ्त के 4 रन आते हुए. बट इसी के साथ 28 ओवर हो चुके हैं. 203 रन पे पहुंच चुके हैं राइजिंग टाइटंस विद 8 विकेट डाउन्स, 2 विकेट्स मोर इन हैंड बट द टारगेट दे आर चेजिंग इज 61 रन्स इन 12 बॉल्स. काफी हद तक नॉर्थर्न नाइट्स के हाथ में ये गेम आ चुका है बट यू नेवर नो. राइजिंग टाइटंस क्या 10 बॉल 10 छक्के एंड कैन कन्वर्ट दिस गोल गेम. लेट्स सी. तो इन द मील वाइल मेरे साथ जो मेरे कैमरा टीम से हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा 10 बॉल में 6 हर मतलब बॉल में एक 6, क्या लग रहा है आपको राइजिंग टाइटंस मार पाएगी? मे बी. कुछ भी हो सकता है. दैट्स क्रिकेट, दैट्स द गेम ऑफ द ब्यूटी, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द क्रिकेट. सो पहली बॉल इस ओवर की उठा के मारने की कोशिश की है. लेट्स सी फील्डर पीछे मौजूद है कि नहीं. फील्डर पीछे मौजूद, सिर्फ 1 रन यहां मिलेगा. तो अब जो रन रेट हो चुका है वो हो चुका है 30 का. रिक्वायर्ड रन रेट 30. Nandon 32 runs 1 wicket. Second ball of the over. Full toss, direction दी है, speed को उपयोग किया and that's a 4. Impressive 4 by the team. And काफी अच्छा बैट प्लेसमेंट था, काफी अच्छी टाइमिंग थी यहां पे. 10 बॉलों का अब ये पूरा गेम रह गया है and the score team is chasing is really big. 56 run in 10 balls. 9 balls, 56 runs to go.
तीन बॉलें और रहती हुई इस ओवर की. So let's do the reverse countdown, everyone. 9 balls, and like I said, 56 runs to go. Satvik on strike. Anandan as the bowler. Fourth ball उनकी तरफ से. Again उठा के मारने की कोशिश, but straight to the fielder. कोई गलती नहीं यहाँ पे. 8 balls, 56 runs to go. Now maybe Rising Titans का यही strategy होगा. Maybe they are not able to win, but at least let's not give away all the 2 wickets that they have. Second last ball of the over. उठा के मारा है, पीछे देखना पड़ेगा फील्डर अवेलेबल है कि नहीं. And हल्का सा मिस हुआ by the captain. Good attempt, definitely good fielding attempt, we should say. एक बार एक्शन रिप्ले देखते हैं. काफी हवा में थी, पीछे फील्डर मौजूद, कैच करना चाहा, दोनों हाथ में टच होके निकली, बट अगेन फर्स्ट स्ट्राइक वॉज कि पहले बॉल उठा के ट्राई करना है रन आउट करने का. सो गुड स्ट्रैटेजी. 7 balls, 55 runs to go. उठा के बोला है, अगेन फील्डर के हाथ में, सिर्फ एक रन मिलता हुआ यहां पे. So with this, guys, we have ended 29 overs for this match. Rising Titans sitting at 210 runs with 8 wicket down. In last 6 balls, they need to score 54 runs. Northern Knights सिर्फ 6 बॉल दूर अपनी जीत से. But still, you never know. और अगर रिक्वायर्ड रन रेट की अब बात करें, जो गेम के स्टार्टिंग में था 8 का रिक्वायर्ड रन रेट था, करंट रन रेट 9-10 का चल रहा था, वो बिल्कुल बदल चुका है. इट्स 54 नाउ. पहली बॉल उछा के मारा है, पीछे फील्डर है कि नहीं, लैंडिंग इन नो मैन्स लैंड, बट फील्डर पीछे मौजूद, देखना पड़ेगा रन लिया है कि नहीं. Five balls, 53 runs to go. 5 बॉल का गेम रहता हुआ. Again straight to the fielder, but थोड़ा सा मिस हुआ यहाँ पे, and that's a 4. But कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं नॉर्थर्न नाइट्स के लिए. सिर्फ ये 4 बॉल्स का गेम और. पांच रन आते हुए अभी तक इस ओवर में, बट अब सिर्फ बची हैं 4 गेंदें और रन चाहिए 49. थर्ड बॉल बाय गौरव. अगेन द विकेट कीपर वॉज रेडी कि बॉस आज तो मैं चौथा भी स्टेप आउट करूंगा. इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव बॉलिंग बाय गौरव सो फार. 3 विकेट लिए उन्होंने अभी तक इस ओवर में, बाय जस्ट गिविंग 38 रन्स अभी तक इस स्पेल में. घुमा के मारने की कोशिश, पीछे फील्डर नहीं, सीधे 4 रन के लिए. एंड मेरे ख्याल से राइजिंग टाइटंस की सपोर्टर्स का यही कहना होगा, वी वांट 6, वी डोंट वांट 4, बट इट्स वे टू लेट नाउ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 बॉल का गेम रह गया है एंड रन चाहिए 45. नॉर्थर्न नाइट्स 2 बॉल दूर अपनी जीत से. और 5th ball of the over, second last ball of this match by Gaurav, faced by Satvik. Again उठा के मारने की कोशिश, पीछे फील्डर मौजूद, रन आउट की कोशिश, and it's out. काफी बेहतरीन, काफी अच्छी स्ट्रैटेजी, काफी अच्छा टीम वर्क यहां पे नॉर्थर्न नाइट्स द्वारा. एक बार फिर से देखते हैं. फील्डर के हाथ में गई, फील्डर ने फुल स्पीड में, कोई गलती नहीं की, सीधा फेंक के मारा. एंड डेफिनेटली उन्हें चेज करना भी चाहिए था, बट लास्ट विकेट टू गो, लास्ट बॉल टू गो, एंड गौरव द्वारा कोई गलती नहीं यहां पे. सीधा बॉलर के हाथ में, एंड गौरव ने सीधा उसके विकेट. So with 1 ball to go, Northern Knights, are you ready?
Last एक बॉल का गेम 45 runs in one ball. And again एक और बार उठा के मारा है, देखना पड़ेगा 4 मिलता है कि नहीं. And that's a 4, but इसी के साथ इनिंग होती है खत्म. And the winner for the match is none other than Northern Knights. A very impressive match by both the teams, definitely. But at the end of the day, winner तो सिर्फ एक ही होता है. And today, that has been Northern Knights, just dominating the game like they did in the last match, and they made it happen. With this, thank you everyone. This is MC Granshu. We will be catching up soon.
Hi everyone, this is MC Agranshu and welcome back to Emerging Stars Champions Trophy Season 1. And this is day 2. We just ended up having our second match happening between Northern Knights and none other than Rising Titans. And it was a kafi kaante ki takkar. It was a very high competition match. But we all know who is the winner. It's none other than Northern Knights again dominating the game like anything. So, ek baar pehle to let's clap for them. And none other than we have the captain again from the Northern Knights again. So welcome back, bro. And again, we know what he did. He had not just played the game, he has dominated the game like anything. Out of the complete score, he himself contributed like 153 runs for this. So first of all, father claps, let's clap. Give him a big round of applause. And again, sir, how did you feel? कैसा रहा पूरा experience after winning the match? At any stage did you felt कि आज शायद हो सकता है कि आज का match ना जीते, but what stage you think कि you guys actually dominated it? Yeah, we played really well. The other team gave us a scare during the power play when Viraj was, hitting, but we, lowered down the run rate. And I think the changing point was the run out of Viraj, which happened. It was a miscommunication between, and I think that's when we got the game in our hands and we took consistent wickets and restricted them to. That was impressive. That was definitely impressive. But yeah, again, one quick point I want to understand. If Viraj wicket was not gone, do you guys still think you would have the game today? Yeah, it would have been really close. It would have been really close, but I think we still would have got it in the back. The run rate was increasing a lot, so yeah, I think we still would have won. Definitely. And we have seen how you guys went through that, the complete pressure and everything, and how eventually you captured the game. So definitely let's give a big round of applause to the complete team, to all the players that we had today. And having said that, definitely we know who is going to be the man of the match today. So for this particular thing, let me invite quickly former Ranji player Mr. Pravesh ji. Savesh ji, I'm so sorry for miscommunication. Mr. Savesh ji, former ex-Ranji player. If circally, please, can we have a big round of applause? Very much. And man of the match goes to none other than the player himself, the captain himself. 153 runs. Thank you so much, sir. Thank you so much for coming. Thank you so much for joining us. So this side MC Agranshu. Let's see how it goes and stay tuned, everyone. We will be continuing with day 3. We will be continuing with next matches also. So stay tuned, everyone, and let's see how it goes. Thank you.